Station for Civilization. 101 Hits FM. You asked for something different, and this is our reaction. The voice of Pakistan. This is the voice. International network of FM 101. Keep listening. It's coming. LA. से आपको खुश आमदीद कहते हैं FM 101 के नेटवर्क पर। आपको लिसनर्स बताते चले कि आज हमने, जैसा कि आज मॉर्निंग से हम आपको बता रहे हैं कि हमारे आज स्टूडियोज में कुछ स्पेशल गेस्ट मौजूद होंगे। 3 बजे से लेकर 5 बजे तक एक खसूसी प्रोग्राम आप लोगों के लिए तरतीब दिया गया है और ये प्रोग्राम किस सिलसिले में है? जी हाँ जनाब, वीज़ा इशूज़, कल्चरल एजुकेशन एंड एक्सचेंज प्रोग्राम, और किस मुल्क के लिए है? जी हाँ जनाब, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप लोगों के जहनों में बहुत सारे ऐसे सवालात होते हैं, बहुत सारी ऐसी क्यूरीज होती हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, लेकिन आपको एक प्रॉपर वे नहीं मिल रहा होता, कोई ऐसी गाइडेंस नहीं मिल रही होती। आपका जो शकूक व शुबहात आपके दिमाग में होते हैं उनको किस तरह से एड्रेस किया जा सके। सो इस सिलसिले में टाइम टू टाइम FM 101 इस्लामाबाद स्टूडियो से आप इस तरह के एक्सक्लूसिव प्रोग्राम सुनते रहते हैं। और आज ना सिर्फ ये कि वीज़ा इश्यूज़ के हवाले से हर सतह पर जिनकी मैंने आपको कैटेगरीज बताई उनको हम एड्रेस करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ वीज़ा जो कॉन्सुलर ऑफिस से हमारे पास मौजूद हैं शख्सियात वो भी होंगी। और इसके अलावा कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हमारे साथ आज FM 101 इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं जो एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जा चुके हैं और 6 महीने वहां पर ना सिर्फ ये कि उन्होंने काम किया है, वहां रहे हैं, वहां के कल्चर को समझाया, बल्कि पाकिस्तान की आइडेंटिटी को कैरी करते हुए गए और पाकिस्तान का नाम किस तरह से रोशन किया है। ये तमाम चीज़ें भी जो हैं वो आज हम आपके ये जो 2 घंटे का प्रोग्राम है इसमें हम ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो जनाब, सबसे पहले मैं तारुफ करवा दूं, हमारे साथ मौजूद हैं और ये मज़े की बात यह है कि दोनों ख़वातीन मौजूद हैं जो हमारे पास US एम्बेसी से इस वक्त तशरीफ लाई हैं। साहर हुसैन, आपको हम वेलकम करते हैं FM 101 इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। Thank you so much for having us. जी, और साहर हुसैन के हवाले से लिसनर्स हम आपको बता दें कि ये इस वक्त US एम्बेसी इस्लामाबाद में खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। इससे कबल जो है वो कंपाला युगांडा में जो है वो कॉन्सुलर सेक्शन में जो है वो खिदमात सर अंजाम दे चुकी हैं NIV चीफ के तहत एंड फ्रॉड प्रिवेंशन मैनेजर के तहत। अब ये क्या कैटेगरीज हैं ये भी वैसे अभी हम इनसे पूछेंगे। ईस्ट अफ्रीका में जो है वो ईस्ट अफ्रीका वॉज हर होम फॉर ओवर 7 years, यानी 7 साल आप ईस्ट अफ्रीका में रही हैं। इसके अलावा HIV एंड एड्स ट्रेनर के तौर पर आप काम करती रही हैं केनियन बुश में। इसके अलावा जनाब और मजीद क्या है, पीस क्रॉप्स के लिए भी खिदमात सर अंजाम दी हैं। वो क्या हैं वो हम इन्हीं की जुबानी सुनेंगे, लेकिन इसके नतीजे में जो है आपने साथ साथ में MA इन इंटरनेशनल रिलेशंस आपने ये डिग्री रिसीव की और ये आपने लंदन से की है। सो लंदन से पढ़ाई मुकम्मल की। इसके अलावा जो यहाँ खिदमात सर अंजाम दे रही हैं वो US एम्बेसी के लिए दे रही हैं। तो ये हम यकीनन इनसे इनका जो सफ़र है वो भी सुनेंगे और साथ साथ में वीज़ाज़ के जो इशूज़ आप लोग हम तक पहुंचाएंगे वो भी हम अपने प्रोग्राम में पेश करेंगे। इनके साथ तशरीफ रखती हैं जिमी मार्टिन, और जिमी मार्टिन के हवाले से हम आपको ये बता दें कि ये भी इस वक्त जो है वो US एम्बेसी में खिदमात सर अंजाम दे रही हैं और US डिप्लोमेट हैं। इसके साथ साथ US स्टेट डिपार्टमेंट से भी मुंसलिक हैं और पाकिस्तान में जो है वो सितंबर 2010 से हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि साउथ अफ्रीका और मैक्सिको में भी खिदमात सर अंजाम दे चुकी हैं। और हमने जो स्टूडेंट्स के हवाले से बताया वो भी आपको तक जो है वो इंट्रोडक्शन पहुंचा दें। फरहान अजहर हमारे साथ मौजूद हैं। एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत ये अमेरिका गए, कहाँ गए और ये जो एक्सचेंज प्रोग्राम था उसमें इन्होंने क्या कुछ सीखा, वो तमाम चीज़ें हमारे साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा शंदाना खान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम जो है वो बात करेंगे। ये भी एक कल्चरल प्रोग्राम के तहत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जा चुकी हैं। आप तमाम लोगों को हम वेलकम करते हैं, खुश आमदीद जी। और सबसे पहले जिमी, आप उर्दू बोल सकती हैं और आज आप हमारे लिसनर्स के थोड़ा सा जो है वो ये मुश्किल आसान कर दें कि उनको अंग्रेजी के अलावा वो उर्दू में भी आपसे सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं उर्दू बोलने की कोशिश करूंगी, लेकिन मैं थोड़ी उर्दू बोलती हूँ। थोड़ी उर्दू बोलती हैं और मैं उर्दू समझती हूँ। उर्दू समझती हैं, चलें ठीक है। और हमारे जो एंकर्स इस वक्त मौजूद हैं FM 101 इस्लामाबाद स्टूडियोज में, हमारे साथ मौजूद हैं सादिया। Assalamu alaikum listeners, you were listening to me for last 2 years and now you're going to listen to me again for another 2 hours.
ओके और तलहा हमारे साथ मौजूद हैं. वेलकम तलहा आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम. Thank you very much. It's been a long awaited break, but I'm really glad to be back. And जिस तरह मैडम सदफ ने आपको बताया कि we've had a long going process with the Office of US Visa Counselors, and we've had different programs, and it's a great process. We've tried to make it better every other time, and now it's the interesting additions is that we've got students with us जो कि आपको अपना personal experience बताएंगे. They've gone for cultural exchange, like Ma'am Sadaf told you. Their names are Farhan and Chandana. They are from local universities. हमारी तरह के students हैं who went there, who had a great experience, and वो आप in the next 2 hours they'll tell you a lot more details about how to apply and जो भी आपको different confusions हैं regarding going to the United States. सादिया, हम चाहेंगे कि हमारे listeners को आप SMS करने का तरीका और live calls किस तरह से वो participate कर सकते हैं वो बता दीजिए. Well, sure, आप हमें कॉल कर सकते हैं. 111-0011 is their number, जिसके ऊपर आप हमें डायल करेंगे, कॉल करेंगे, हमें बताएंगे आप हमसे क्या कहना चाहते हैं. पर्टिकुलरली आज के प्रोग्राम के हवाले से SMS करने के लिए आप बहुत सिंपल तरीके से SMS करेंगे. 11 लिखेंगे, स्पेस देंगे, मैसेज लिखेंगे, अपना नाम लिखना नहीं भूलेंगे और उसको भेज देंगे हमें 4471 पर. और अगर आप हमें चाहें तो हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं. फेसबुक आईडी जनाब facebook.com/FM101 पाकिस्तान ये ऑफिशियल पेज है. और इसके अलावा लिसनर स्काइप के जरिए भी आप प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं, ना सिर्फ कॉल्स के जरिए बल्कि स्काइप के जरिए आप इंस्टेंट मैसेज भी हमें भेज सकते हैं. हमारी आईडी है FM101 PBC यानी पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन. सबसे पहले साहर, आपसे मैं प्रोग्राम का आगाज करना चाहूंगी और आपसे पूछना चाहूंगी कि आपका जो एक्सपीरियंस रहा, आपने अफ्रीका में बहुत अरसा जो है वो खिदमत सर अंजाम दी और अब आप पाकिस्तान में हैं. आप बेसिकली पाकिस्तान से ताल्लुक रखती हैं या यू आर अमेरिकन पाकिस्तानी, क्या है? अब ये इसके हवाले से हमारे लिसनर्स को बताइए. Well, I was born in the United States. My mom is from Pakistan, and this is my first time living in Pakistan, and I've really enjoyed it. Islamabad is a beautiful city. It's been a really wonderful, welcoming experience for me. And it's helped me to learn more about Pakistanis, because the Pakistanis I meet in America are a little bit different than Pakistanis here in Pakistan. Sahi. Because, when we grow up in the States, we grow up, studied in a Western way and dressing in a Western way, etc. And so I always had this idea that Pakistanis in Pakistan were very traditional, and coming here now, I see that, people here are so similar to the people in the United States, and we have the same interests and the same desires. Sahi. And that's why one of the reasons why we think that Pakistanis are so great as candidates to study in the United States, because we feel like we have a lot to share, we have a lot in common, but we also have a lot to teach each तो other. सहर, आप फर्स्ट टाइम पाकिस्तान अभी आई हैं? No, I came for vacations before, but this is my first time living here. Living here and also working here. And also working Have here. you visited any other city besides Islamabad? I've been outside of Islamabad a little bit. I went to Taxila, obviously to visit the historical sites there, which were absolutely beautiful. I went to Murray. I've been to Natia Gully. Actually, I went to Lawrence College in Murray. My dad studied there for a couple of years, like in the 60s. Right. So I got to visit that, which was really interesting. सही. My favorite question, sorry I'm cutting you, but I love to ask this question to anybody, any foreigner who's here. What do you think about the food? I love the food. Although so when I was a child coming for vacation, I'd come to visit Lahore. So I'm used to Lahori food. Okay. But there's such a great selection of foods here in Islamabad, and you always get What to is eat your good food. favorite then here in Pakistan? I mean, the best thing you like, you can just eat any time or any moment. You're just willing to go for that particular thing. What that might be? Yeah, Oh, you're really putting. That's the most difficult question I'm going to get all day. See, I told you. It's probably the mithais. Mithai, the alright. rasmalai and the gulab jamun and all of that. You don't get it as Jamie, what about nice you? And What about you? Food? Favorite food? मेरा पसंदीदा खाना कौन सा है? खाना. See, I know Pakistanis don't like to hear this because you're all so proud of your meat. But मुझे दाल बहुत पसंद है, मुझे बिंदी बहुत पसंद है, मुझे सब्जियां बहुत पसंद है. We're proud of our sabziyas. But people say, but not the meat. मुझे ये गोश्त पसंद है, लेकिन ज्यादा पसंद सब्जियां हैं. So you are veggie. I like veggies. Okay. Right. अच्छा जिमी, आप अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताएं. आप पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान में आप खिदमत सर अंजाम दे रही हैं, उर्दू आपने सीखी, कैसा लगा यहाँ पे आके? एक एक्स्ट्रा स्किल है, उसने आपको कितना हद तक जो है वो हेल्प आउट किया है सारे आपके प्रोफेशनल करियर में? ये सच है कि मेरे लिए क्योंकि मैं उर्दू समझती हूँ तो मुझे बहुत मदद करते हैं. जब मैं
लोगों से मिलती है तो हमेशा मैं थोड़ी उर्दू बोलने की कोशिश करती थी और आमतौर पर बहुत मेरी उर्दू सुनकर बहुत खुश है। मैं जानती हूँ कि मेरा लहजा इतना अच्छा नहीं, लेकिन यू आर वेरी फ्लुएंट इन उर्दू। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। आप कोशिश करती हैं, सही। और आपको कैसा लगा पाकिस्तान और स्पेशली इस्लामाबाद? मुझे पाकिस्तान बहुत पसंद है, मुझे इस्लामाबाद बहुत पसंद है। हकीकत में कि पाकिस्तान आने से पहले मेरा कोई ख्याल पाकिस्तान के बारे में है, लेकिन इस्लामाबाद एक बहुत खूबसूरत शहर है और ये सच है कि बरसात के मौसम के दौरान इस्लामाबाद एक बहुत खूबसूरत जगह है। Heaven on earth. जी, ये सच है। और you love rainy season. All right. जी, और लिसनर्स, आप लोग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे थे। आप 111000101 के जरिए प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। So we have this message for Jimmy, and that is a guy, and he's saying, कि Assalamu alaikum, I like your Urdu very much, sir. It's true. बहुत शुक्रिया। It's an appreciation. Okay, और वीज़ा प्रोसेस की तरफ आते हैं, क्योंकि सहर आपसे भी और जिमी आपसे भी ये सवाल मैं दोनों से करना चाहूँगी। एक आम पाकिस्तानी जिस वक्त वो अप्लाई करना चाहता है एम्बेसी में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाना चाहता है, क्या मेन जो आप उनको गाइड करेंगी, क्या डॉक्यूमेंट्स उनके पास होने चाहिए, अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है, वो तमाम प्रोसीजर, ये आप हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करें। इसी से हम अपने प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं। Well, I suggest that prospective students visit our website. That's US Embassy. Sorry, Islamabad.usembassy.gov. And on the website, we have a lot of information about student visas for prospective students. After they have visited our website, students should look into the schools that are and the programs that are available in the United States. And once they've found a school that they think is a good match for them, the school will they'll submit their application and do all of that. The school will then send them a document. It's called an I-20 document. Okay. It's a really important document that students should bring to their visa interviews. Once they have that, or even before they have it, they can look on our calendar to see if they can schedule an appointment, because that's also a really important part of the process. Okay. You want to make sure that you give yourself enough time to apply and obtain your visa before you travel to the States. And so the date on the I-20 is really important to tell us how early you can travel. You can visit our calendar, or you can search for an appointment online using that same website, islamabad.usembassy.gov. And once you have your appointment, then you're clearly wondering, what do I do? What do I bring? When we are interviewing for prospective students, we're really looking to see if the students qualify for the type of visa for which they're applying. And that means, do you have the required educational background? Can you finance the education? Can you present yourself as someone who would be a successful student in the United States? That means if you haven't completed your full high school education, or if you've never taken something, any kind of exam that, any kind of entry exam. It helps to have those kinds of things, like a TOEFL, an SAT, because it shows us that you are preparing, you are an interested student, and you're also preparing to go to the university. And it shows us where you are in comparison to other students. Is your English very good? Is your English not so good? Are you going because you want to learn English? Things like that. So show us that you can study there. The finances are very important. Some people will just bring us the I-20 and it will say, see, I can pay the money, because it puts the figures on that form. We would like some supporting documentation to show that the person who has said they will finance the education can do that. And lastly, we'd like to see school transcripts, basic, just the kind of fundamental educational background. What kind of what school did you go to? What kinds of grades were you getting? And just be able to tell the officer why you chose the school, why you'd like to study in the States. Those are important things to think about before you come for your interview. Just a couple of questions. Sure. You first mentioned that these different things when you have to consider when you're applying. What a lot of students over here confuse is, when do they have to apply? For instance,
when an undergraduate student applies for their master's program, or when a high school student applies for the undergraduate program, they usually kind of make it late. They wait for their results, their final transcript, because they're not sure if what grades they're going to get. Then when they apply, it kind of takes a lot of time. They end up usually wasting an year. So it's a really huge confusion for a lot of students. So what do you think is the optimal time when you want to go to the States and when you apply? How much time gap should you keep that in mind? That's a fantastic question, and like you said, some students wait to get their scores. I personally think that's a very good idea, because if you haven't gotten a high enough score, if you want to retake any kind of test, or just to be able to show your school transcripts that you've completed the course, it's important to have those documents. It can take anywhere from 6 months to a year sometimes. It really depends on the different schools. You should look at the school websites and see what their application process is. And that's the same for postgrad, undergrad, high school? Absolutely. Every school is going to be different and will have a different process. So definitely start thinking about it before you're taking your exams, right after your exams. Really keep those things in mind and prepare your documentation and prepare your applications, because it does take a little bit of time. And let's say a student does have maybe a year or more gap between finishing school and being accepted to another program. We would love to know what you've been doing in that time. Have you been sitting at home? That's fine. If you've been working, if you've been volunteering, if you have been taking any other courses, those are fantastic things to tell your interviewing officer, to show that you have an interest in pursuing the field of study. Okay. जिमी आपसे सवाल मैं पूछना चाहूँगी, कभी मेन डॉक्यूमेंट्स के हवाले से सहर ने बताया, लेकिन इसके साथ साथ आपको पता है कि अक्रॉस द वर्ल्ड जो है वो एक्सचेंज प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं, स्टूडेंट्स जा रहे होते हैं चाइना, ईरान, मुख्तलिफ। ये मैंने कंट्रीज इसलिए मेंशन किए हैं कि ये थोड़े से अगर इनकी पॉलिसीज टुवर्ड्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देखा जाए तो थोड़ा सा ज़रा सेंसिटिव केस भी हो जाता है। अब स्टूडेंट का काम होता है, बस जाता है, वो यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ता है, जो भी नॉलेज लेना होता है, और उसके बाद वापस आता है। बहुत सारे ऐसे केसेस जो हैं वो सुनने में आते हैं, या स्टूडेंट्स के दिमाग में ये एक कन्फ्यूजन होती है कि शायद हम इन कंट्रीज़ में जाएं तो हमारे लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में फिर अप्लाई करना जो है वो मुश्किल हो जाए। तो क्या इस किस्म की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है? ये वीज़ा सिलसिले में है, और स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से हम बात कर रहे हैं। Sahar, if you want to answer this question. मैं कल्चरल सेक्शन में काम करती हूँ, तो मैं वीज़ा के बारे में नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में बोलूँगी। ठीक है, चलिए हम स्टूडेंट की बात कर लें, देन कल्चरल के हवाले से भी सेम क्वेश्चन जो है वो मैं आपसे पूछूंगी। जी, Are you talking just about China, or are you talking China, ईरान या कुछ ऐसे कंट्रीज जो थोड़ा सा अगर जिनकी देखें फॉरेन पॉलिसी अमेरिका के साथ थोड़ा सा जो जिनके साथ प्रॉब्लम चल रहा है, उस हवाले से जब स्टूडेंट आता है और उसके पास ये तमाम एक्सपीरियंस होता है, तो क्या आप समझते हैं कि क्या उनके जहनों में जो ये कन्फ्यूजन है कि शायद हमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का वीज़ा ना मिले, या इन बेसिस पे कि हमने इन कंट्रीज में ऑलरेडी ट्रैवल कर लिया है तो शायद हमें रिजेक्ट कर दिया जाए, तो क्या इस तरह की कोई है? No, there is no policy that if you've traveled to countries that maybe the United States has reservations. Not reservations, but we have foreign policy issues with maybe. Yeah. We have no policy that people cannot travel. We want people who are eligible for visas to come to the United States. We want people to come in. We have students that have been to Iran, China, they've been to so many countries throughout the world, and now they want to come to the United States, and it's absolutely fine. I issue visas, I have issued visas to students who've been to those countries, to just travelers who've been to those countries, and it's not a problem at all. We have visitors from... स्टूडेंट के अलावा भी अगर डिफरेंट कैटेगरीज की अगर हम बात करें तो उसमें आप लोग वीज़ा इशू करते हैं, मतलब इस तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है? No, there's no problem. Your travel history will not bar you from traveling to the United States. Right. We look at your whole application, and if you are qualified for the visa, we want you to go and study in the States because it's so valuable. The United States was built on an immigrant population, and we want immigrants to come and study and work with us, and it's really important to us that people from all countries come and try and teach us what they can teach us, and we can teach them what we can. Right.
I just had one question. When you were talking about the visa process in the previous part, we've got different programs, the exchange program, the Fulbright programs, just applying for any other university. The visa process specifically, is it the same for across the board for all of the programs, or is it different? No. Do you want me to explain that? No. In fact, that was one point I wanted to differentiate on that. When Sahar was describing the student visa process, she was talking about students who are paying for their own visa, which is why they needed, for example, to demonstrate their financial status. Students who are going on an exchange program have already been through a fairly rigorous process in terms of their interview. We work with the United States Education Foundation in Pakistan. Their website is usefpakistan.org. They will go through a fairly rigorous interview process. They will go through a screening of application process, so that when these students are going to be traveling to the U.S., all of their costs are borne by that process. So they're borne underneath this program. So the need to show financial documents doesn't exist. The need to even show transcripts, because they've been accepted already to the program, they've been accepted to the university, is not there either. And actually, Sahar can give a bit more detail about what is required for our exchange programs. But the visa process is distinct from someone who, for example, is going to pay for their own master's degree or pay for their own undergraduate degree, and someone who's going to go on a merit-based scholarship. Yeah. राइट और अभी हमारी जहाँ पर हम वीज़ाज़ के हवाले से बात कर रहे हैं, तो यकीनन कल्चरल एक्सचेंज के तहत जो स्टूडेंट्स गए हैं उनका भी हमने तरह सादिया हम लोगों ने अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में बताया था. हमारे साथ फरहान अजहर हैं और इसके अलावा शंदाना खान भी हैं. शंदाना, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें. आप कैसे एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए मुंतखब हुई, कैसे आपको पता चला? सबसे पहले तो ये बताएं कैसे पता चला, और फिर आपने किस प्रोसेस से गुजरी, और इसके हवाले से तफसील पहले बताइए. जी, पहले तो अस्सलाम वालेकुम सबको. मैं अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए गई थी अपने यूनिवर्सिटी. एक दिन उस यूनिवर्सिटी क्लोज हो गई थी सब कुछ, पर आई वेंट देयर टू टॉक टू सम ऑफ माय टीचर्स अगर वो मुझे एक्स्ट्रा असिस्टेंस देना चाहें. तो मैं गई, तो मेरी टीचर जो थी, शी वाज रियली हैप्पी कि मैं बाकी स्टूडेंट्स के बजाय अकेले पढ़ने आई हूँ. अच्छा. तो वो मुझसे इतनी इम्प्रेस हुई कि उन्होंने बोला कि ऐसे स्कॉलरशिप्स आए हुए हैं डीन्स वगैरह के पास, और वो कह रहे हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स जो कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और उसके अलावा भी उनके जो ग्रेड्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, उनको आप नॉमिनेट करें. सही. तो उसके लिए तो बहुत देर हो गई थी, बट लेकिन मेरी टीचर ने फिर भी मुझे सजेस्ट किया. तो उन्होंने कहा कि आप ले लें और आप अप्लाई करें. तो एप्लीकेशन में 3 दिन रह गए थे. उन 3 दिन में 2 दिन सैटरडे संडे थे. तो आई जस्ट हैड मंडे. लेकिन किस्मत में लिखा था, इस वजह से मैंने मंडे जो है पूरा अपने रेफरेंस लेटर्स फ्रॉम माई ओल्ड इंस्टीट्यूशन, अपना करंट इंस्टीट्यूशन, सबसे लेकर मैंने अप्लाई किया. तो बेसिकली माई टीचर वॉज द वन हु एक्चुअली टोल्ड मी टू अप्लाई फॉर इट. उसके बाद बस सारा कुछ प्रोसेस स्टार्ट हो गया. जनवरी में अप्लाई किया, मार्च में जो है हमें इंटरव्यू की कॉल्स आ गई, अप्रैल में टॉफल टेस्ट हुआ, मई तक उसके रिजल्ट्स आ गए. उसके बाद मुझे जो है वो 6 वीक्स का एक प्रोग्राम है, उसके लिए मुझे सिलेक्ट किया गया था. वो लीडर्स होते हैं, उसमें 6-7 लोग होते हैं, उसमें सेलेक्ट किया था. इट्स कॉल्ड SUSI, SUSI, but I don't really know the abbreviation, I'm sorry. Okay. Study at the US institutes. Yeah. Thanks, Jamie. No problem. So उसके लिए सेलेक्ट किया गया था, but I was an alternate student. तो जो प्रिंसिपल स्टूडेंट्स थे वो पहले जाते हैं. तो जो भी प्रिंसिपल स्टूडेंट्स थे वो चले गए. उसके बाद मुझे 6 months के प्रोग्राम में डाला गया था, which is basically studying, जो पहले थे, that was just a leadership, like it was just like a conference. We had to go from places to places, right? With American students, with a bunch of them. इस बार जो है फिर मेरे 6 महीने के लिए मैं गई थी, और 6 महीने के लिए जब मैं गई तो मैं ज़्यादा खुश थी कि मुझे ज़्यादा टाइम मिल रहा है, मेरे एक्सपीरियंसेस ज़्यादा होंगे, मैं ज़्यादा सीखूंगी, और स्पेशली पढ़ाई इज़ अ वेरी बिग पार्ट. सो उसके बाद 6 महीने के लिए मैं थी. सो बाय द टाइम आई वेंट टू अमेरिका, इट वाज द नेक्स्ट ईयर, वाज 2012. सो जनवरी 2012 में मैं अमेरिका गई. और उसके बाद it's very interesting that when I applied I was 18. जब मेरा interview हुआ I was 19, and I celebrated my 20th birthday in America. Okay. So that's kind of really interesting. So जितनी भी मेरी मेहनत थी पूरे तकरीबन 1.5 साल की, वो सारी 4 महीने में पूरी थी. तो वो जो जितना खून पसीना था वो 4 महीने में मेरे सामने आया. और it was just like living my dream. It was so much. It was not just what people see. It was so much more.
पर्सनली मैंने बहुत कुछ सीखा, ऐसी चीज़ें जो मैं नहीं मेंशन कर सकती बिकॉज दे आर रियली पर्सनल. लेकिन मैंने उसके अलावा बहुत कुछ सीखा, इतनी ज़्यादा कल्चरल एक्टिविटीज़ की. सबसे बड़ी बात यह कि वहाँ जाके अपना जो मेरा ड्रीम है वो I was living my dream. That's the biggest thing. And not everybody gets a chance to do that. यहाँ पे जो मैं यहाँ बैठी हूँ या मैं जो बात कर रही हूँ, that's also a part of the same dream. So I'm just really thankful to everybody, State Department and just Sahar and Jamie and everybody who was actually behind the program, helping us in any way possible. And they're still helping us, and so it's a great experience. And for people, the experience has finished, but for me, it's still going on. Like, this is a part of the experience. Coming here, कभी सोच भी नहीं सकते सेक्रेटरीट में सिर्फ ये बोलेंगे कि वहाँ जा रहे हैं, नाम लिखवाया हुआ है और हम चले जाएंगे. So that's like a big thing. और it's really amazing. वहाँ पे बहुत कुछ करने को मिला. Cinnamon Challenge मैं कहना चाहूँगी. I mean, it's kind of silly, but Cinnamon Challenge मैंने वहाँ पे किया, and my advisor was really like, he was like, just send me the videos of you doing Cinnamon Challenge. I was like, sure, why not? So if you guys don't know what Cinnamon Challenge is, I'll tell you. Cinnamon Challenge hota hai ye physically for people it's impossible to swallow 1 teaspoon or 1 tablespoon of cinnamon challenge, and you just choke on it because it's so dry. Me and my friend, we both did it, and she actually beat it, but I didn't. But it was really silly, and so that was the one thing that I did. Iske baad basketball jo matches hote hain wahan hum log gaye. Iske alawa jo swimming वगैरह में हम लोगों ने की, cliff diving वगैरह, और जो मतलब वहाँ पे creeks होते हैं छोटे छोटे, वहाँ पे हम लोग rafts में बैठ के बहुत कुछ किया. So I mean, all in all, I did a lot of stuff. So it was a great experience. सही. और आप यहाँ पर जो है वो आपका मेजर था सोशियोलॉजी. वहाँ पे जाके आपने स्टडीज के हवाले से भी कुछ किया, सोशियोलॉजी को आपने मजीद एक्सप्लोर किया, कुछ वो भी बताइए हमें. जी बिल्कुल. यहाँ पे मेरा मेजर सोशियोलॉजी है, वहाँ पे भी मेरा मेजर सोशियोलॉजी था. We could actually हम चेंज कर सकते थे मेजर्स अपने, लेकिन मैं उसी के साथ like I stuck to sociology. सोशियोलॉजी किया क्योंकि मैं चाहती थी कि जो सब्जेक्ट्स यहाँ पे नहीं ऑफर होते वो अगर मैं वहाँ पे अपनी ही फील्ड में ले सकूँ. और उसके अलावा सोशियोलॉजी में मैंने 3 कोर्सेज लिए, जहाँ जबकि आई मीन इट्स नॉट नेसेसरी कि आप 3 लें, आपको एक ज़रूर लेना होता है. लेकिन चूंकि मैं अपनी फील्ड में सीखना चाह रही थी तो मैंने 3 सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट्स लिए. एक मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर विच इज़ बेसिकली bowling. मैंने bowling लिया, but you can take a lot of stuff like skydiving, scuba diving, deep sea, whatever. I mean, there's a lot of options. And then एक जो मैंने और चीज़ ली थी, that was leadership. एक और आपको सब्जेक्ट लेना होता है which is American history या American culture. चूँकि they were taken by the time I went to the university, and they were not like accepting any more students. So I talked to my advisor in Washington, Sarah Bushman, and she just told me that you can take any other subject that's very close to the subjects that we are supposed to take. And so I took leadership. So yeah, those were the subjects that I took. But yeah, all of them just really, really helped me a lot. And one very funny thing was that I was thinking I secured a 4.0 GPA क्योंकि मेरे सारे subjects में A थे, और मैंने कहा bowling में तो ज़रूर होगा, और unfortunately I got B in bowling and I got an A in everything, which is so shameful. So besides your studies and those co-curricular activities, what else you did there, and how was it like? I mean, like आपका अपना experience होता है कि you were there in a new country and the whole food thing is different, the culture is different, people are different. You don't see girls wearing short skirts here, and you do see them there, and the whole thing is different. So how was it? How did you feel like? Yeah, मेरे बारे में ऐसी चीज़ है कि मैं बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेती हूँ चीज़ों को. So और खाने का मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ. Pizza, I love pizza, and honestly I had like pizza for day and night 4.5 months. Or I'm totally fine with it. You know, I miss it so much. Not that I don't get pizza here. Don't get me wrong. Well, that's the different one, right? Yeah, but like I love mac and cheese, and I miss it so much. My mother doesn't know how to cook it, and so but I absolutely love it. And so food मेरे लिए problem नहीं था. Besides studies and everything, we did a lot of other things like cultural activities. तो मैंने आपको बताया जो हम लोगों ने की. इसके अलावा हम लोगों ने community service बहुत ज़्यादा किया, which is basically a very important part of the program. आपको 20 घंटे community service करना होता है throughout that 4.5 months, लेकिन आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं. Wow. So वो बहुत ज़्यादा की, और बहुत ज़्यादा जो सबसे बड़ा difference मैंने when it comes to community service देखा वो ये था कि
US میں آپ کو بہت زیادہ اپرچونیٹیز ملتی ہیں کمیونٹی سروس کرنے کے, یہاں پہ اتنی زیادہ اپرچونیٹیز انفارچونیٹلی نہیں ہیں. یعنی وہاں پہ اگر آپ ایک بینچ کو بھی پینٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو دے ایکچولی کال یو اپ اینڈ دے آر لائک وڈ یو بی لائک اویلیبل ٹو ڈو دیٹ اینڈ اسٹف, اینڈ اٹس کاؤنٹڈ ایز یو نو کمیونٹی سروس, سو اٹس جسٹ امیزنگ. اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. You do feel encouraged and you do feel great about it that you've done something and it's acknowledged. That's right. You know, اتنی چھوٹی سی چیز کو کون دیکھتا ہے, لیکن ہم وہاں پہ یہ بھی دیکھی جاتی ہے. اس کے علاوہ ہماری کنٹری پریزنٹیشنس تھیں تو وہ میں نے دی, اور it was a very good experience. Sahir, a couple of things. You mentioned community service. Could you just, delve into it a little more what you exactly, do? Because people have a huge misconception about community service over there. جی بالکل. کمیونٹی سروس بیسکلی ہوتا ہے کہ کوئی بھی آپ ایسا کام کریں جو کہ والنٹری ہو, اس کے لیے آپ یو ڈونٹ گیٹ پیڈ فار اٹ, لیکن وہ آپ کی جو کمیونٹی ہوتی ہے اس کے لیے ہیلپ فل ہو. تو اور اس کو آپ سوشل ورک بھی کہہ سکتے ہیں. پاکستان میں لوگ اس کو سوشل ورک کے نام سے کرتے ہیں. تو آپ کو بیسکلی آپ والنٹیئر کرتے ہیں. تو ہمارا بھی پروگرام میں یہی تھا کہ یو ڈونٹ گیٹ پیڈ بٹ یو گیٹ اے فیئر چانس ٹو ہیلپ دا کمیونٹی ان اینی وے پاسبل. سو اوکے, اینڈ a few more things. جس طرح ہم نے اس پروگرام کے بارے میں بات کی, اینڈ I being a student as well, a lot of people, they have misconceptions and confusions about the program. So few things to encourage people out there. First of all, and I think most importantly, جو ابھی already students especially undergraduate education میں they don't know کہ آپ کے credit hours transfer ہو جاتے ہیں once they come back. This is something very encouraging. They think کہ ان کی پڑھائی کا سال ضائع ہو جائے گا یا ایک سیمسٹر ضائع ہو جائے گا, but the credit hours that you are already doing in the United States وہ واپس آ کے آپ کی پڑھائی میں کاؤنٹ ہو جائیں گے, and آپ کی پڑھائی میں حرج نہیں ہوئے گا. And more, yeah, please go ahead, please. ایک بات کہ کبھی کبھی کریڈٹس نہیں ٹرانسفر کرتے ہیں, تو کچھ طالب علموں کے لیے کچھ یونیورسٹیوں میں کریڈٹ آورز امریکہ سے نہیں ٹرانسفر کرتے ہیں. تو کبھی کبھی طالب علم کو ایک اور سیمسٹر کرنا چاہیے. What's the condition in which they're not transferred? It depends. It varies from university to university. Okay. And it varies according to their degree program. So like Shandana said, she studied sociology here. In Pakistan, she studied sociology in the US, and so she was luckily able to transfer her credits. That's not always the case. There are students who will have to repeat a semester at university. But by and large, and I work with our students when they return from the US, I think probably 100% have said, although I have to do another semester, it was absolutely worth it. It was worth it. Farhan, your experience? ایکسپیرئنس یہ ہے کہ آئی تھنک ابو نے بتایا تھا میرے, انہوں نے نیوز پیپر میں پڑھا تو میں نے کہا کس کے لیے اپلائی کروں. انہوں نے کہا کر دو یار, ہونا تو نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ موسٹلی یہی ہوتا ہے. سب سے پہلی بات یہی میں مینشن کروں گا کہ اپرچونیٹیز آپ کے ارد گرد گھومتی ہیں, ان کو دیکھیں, اویل کریں, کیونکہ ایک اپرچونیٹی 1 دن 2 دن 1 ہفتہ 1 مہینہ آپ کی زندگی چینج کر دیتا ہے. تو بس ابو نے بتایا, اپلائی کیا. پروسیس جو تھا وہ بہت ہی اسموتھ تھا. آپ کو زیادہ بھاگنا نہیں پڑتا, کوئی اٹیسٹیشن نہیں ہے, صرف آپ کی ٹرانسکرپٹس دیکھیں گے, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز دیکھیں گے, اور اسی پہ سلیکشن ہوگی. آپ کا انٹرویو ہوگا, نارمل انٹرویو ہوگا. اور اس کے علاوہ ایکسپیرئنس بہت اچھا رہا, بہت مزہ آیا وہاں جا کے. فائنلی مطلب یہ لگتا ہے اپنے آپ کو کہ اب آپ نے خود سے کچھ کرنا ہے. اب پیرنٹس کو سائڈ پہ, سب سائڈ پہ. اب تو وہاں جا کے آپ کو پہلی فیلنگ یہی ہوتی ہے کہ یار اب مزہ آئے گا, اب میں اپنی ذرا منمانی کروں گا. اور سب سے زیادہ مسئلہ جو مجھے ہوا آنیسٹلی وہ فوڈ کا ہوا. پاکستانی کھانا دنیا کا لذیذ ترین کھانا ہے, اور میں نے وہاں پہ انڈین کھانا کھایا, بنگلہ دیشی کھایا, لیکن نہیں, جو پاکستانی کھانے کا مزہ ہے وہ دنیا میں کسی کھانے کا نہیں ہے. Jamie, you said no, we hold pride with our food. اور امریکنز بہت پسند کرتے ہیں پاکستانی کھانا, بریانی, کباب, ان کو سارے نام آتے ہیں, اور وہ موسٹ آف دا ٹائمز وہ کہتے ہیں کہ یار بنا کے کھلاؤ. مجھے تو خود کچھ نہیں بنانا آتا تھا, تو اس لیے میرا ٹائم کھانے کے حساب سے بہت مشکل گزرا. میرا ناشتہ بھی فرائز ہوتے تھے, میرا لنچ بھی فرائز ہوتا تھا, میرا ڈنر بھی فرائز ہی ہوتے تھے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایلسس, کیونکہ مجھے خود بھی یہ اپرچونیٹی حاصل ہوئی ہے, وہاں جتنے زیادہ مطلب پاکستانی ریسٹورینٹ بھی ہیں لیکن انڈین ریسٹورینٹ کافی زیادہ ہیں, اور وہاں پر امیریکنس کی تعداد ان انڈین ریسٹورینٹس میں زیادہ نظر آتی ہے بنسبت انڈینس کے. تو خود امیریکنس جو ہیں وہ زیادہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ ہماری جو ہوسٹ تھیں وہ خود بھی امیریکن تھیں, اور وہ ہمیں انڈین ریسٹورینٹ میں لے کے گئیں کہ مجھے یہاں کا کھانا بہت پسند ہے.
صحیح. فرحان, جسٹ آپ کا تھوڑا انٹروڈکشن. آپ ایئر یونیورسٹی میں آلریڈی میکینیکل انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہیں. آپ کس ایئر میں ہیں ابھی؟ میں ابھی 3rd ایئر میں. آپ 3rd ایئر میں. اینڈ ان دا اسٹیٹس یو وینٹ ٹو دا منیسوٹا اسٹیٹ یونیورسٹی. منیسوٹا اسٹیٹ. اینڈ وچ پروگرام ڈڈ یو گو اوور دیئر فار؟ گلوبل یو گریڈ پاکستان. گلوبل یو گریڈ. اوکے. تو آپ ہمیں بفور وی وینٹ آن ایئر آپ بتا رہے تھے یو ٹریولڈ اے لاٹ. یو وینٹ ٹو کیلیفورنیا, شکاگو, لاس اینجلس, ویگس. اوکے. Which was your favorite part to travel? سین فرانسسکو. Why? سین فرانسسکو بہت ایک خوبصورت جگہ ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ سین فرانسسکو جا کے آپ کو امریکہ میں اکانومی کا ڈفرینس پتہ چلتا ہے کہ کیا حالات ہیں وہاں پہ ویل آف لوگوں کے اور جو لوگ غریب ہیں. وہ ایسی جگہ کہ ایک ہی جگہ پہ آپ کو دونوں طرح کے لوگ نظر آ جائیں گے. اور سین فرانسسکو آپ کو ہر طرح کی رائڈ مل جاتی ہے وہاں پہ. پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ بہت ہی مزے کی ہے, بہت ایزی ہے. آپ کو ٹرینز مل جائیں گی, میٹروز مل جائیں گی, کیبل کارز مل جائیں گی, اور گھوڑے بھی مل جائیں گے, جو چیز آپ پسند کرتے ہیں. ہیوی بائکس مل جائیں گے, لیموز مل جائیں گی. تو سین فرانسسکو سب سے مزے کی جگہ. لیکن امیرکنز جو ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں ان کو ساری سٹیز کا بتا دو, لیکن وہ صرف ویگس پہ ایکسائٹیڈ ہو. اور اس کی خاص وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ گیمبلنگ. What happens in Vegas stays in Vegas. اس کے علاوہ کریڈٹ آرز کا جو پوائنٹ تھا اس پہ میں کہوں گا کہ وہاں جا کے آپ زیادہ یہ اس لیے بھی ڈسکریج کرتے ہیں کریڈٹ آرز ٹرانسفر کو کہ وہاں جا کے آپ پڑھائی میں ہی نہ پڑھے رہیں, کیونکہ آپ کلچر ایکسچینج پہ جا رہے ہیں, ایکٹیویٹیز کریں. کیونکہ آپ پڑھائی میں انوالو ہو جائیں گے تو پھر پڑھائی ایسی چیز ہے کہ آپ کو نکلنے نہیں دے گی اس چیز سے. تو آئی تھنک کہ کام کورسز رکھیں لیکن ایسے رکھیں جو آپ بہت زیادہ اس میں پڑھائی میں انوالو نہ ہو جائیں, لوگوں سے ملیں, کیونکہ یہ چانس آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا. پڑھائی اگر آپ کو 1 ایئر بھی ایکسٹرا لگانا پڑ جاتا ہے تو میرے خیال میں اٹس ورتھ اٹ. صحیح. اور کمنگ بیک ٹو یو سحر اینڈ جمی, آپ لوگوں سے کچھ ہم تھوڑا سا ویزا پروسیس کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ڈاکیومنٹس کا تو ہم نے آپ سے پوچھ لیا کہ کون سے ایسے ڈاکیومنٹس ہیں, سپورٹیو ڈاکیومنٹس جو ساتھ لے کر آنے چاہیے. جب ایک اسٹوڈنٹ اپلائی کرتا ہے تو میکسیمم کتنا ٹائم لگ جاتا ہے اس کی اپلیکیشن کو پروسیس ہونے میں, اور اس کو جو آپ اپوائنٹمنٹ ڈیٹ دیتے ہیں اس سارے پروسیجر میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ Well, right now, the waiting time to get an appointment is actually not very long. And it's really important to know that we will expedite visa appointments for students if they can't get an appointment in time to go to school, because it's really a priority for us to interview students. So students in general, please plan ahead. But we will definitely make accommodations for students because we love to send students to the States. So basically, you go to American Express to pay the visa fee there. They give you the receipt and they can schedule the appointment for you. Correct. So they will let you know when you can go. ویسے roughly کتنا ٹائم کتنا لیتے ہیں؟ In my opinion, the earlier the better. So once you get that I-20 form, I would say apply immediately. Because you don't want to have an appointment and no I-20 form. That's really a really important document to have. So at the very least, I'd say about 3 months, because sometimes it can take us a little bit of time to process a visa, and it can take anywhere from a couple of weeks to several months to much, much longer. So it's really important for students to plan ahead. I would say at a very minimum 3 months. صحیح. جمی, آپ سے پوچھنا چاہیں گے, آپ کیونکہ کلچرل ایکسچینج پروگرامز جو ہیں وہ موسٹلی ان کو مانیٹر کرتی ہیں, کتنے قسم کے, کتنے ٹائپس کے جو کلچرل ایکسچینج پروگرامز ہیں وہ اس وقت یو ایس کی طرف سے پاکستانی اسٹوڈنٹس کو آفر ہوئے ہوئے ہیں, اور کچھ ان کی ڈیوریشن بتائیں گے کہ کیا یہ کچھ ہر ایکسچینج پروگرام کچھ منتھس کے لیے ہوتا ہے, فیو ایئرس کے لیے ہوتا ہے, کچھ میکسیمم ڈیوریشن کا جو آپ کا ایکسچینج پروگرام ہے وہ کتنا ہے, اس کی تھوڑی سی ڈیٹیلس بتائیے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت اچھا سوال ہے کیونکہ ہمارے پاس بہت مختلف پروگرام ہے, ایکسچینج پروگرام ہے. تو نوجوان طالب علم کے لیے تو وہ ہائی اسکول والے طالب علم ہیں. ہمارے پاس ایک پروگرام, اس کا نام یوتھ ایکسچینج اسٹڈی اور یس پروگرام. یہ پروگرام ہائی اسکول اسٹوڈنٹس کے لیے, اور وہ امریکہ پہ جاتے ہیں 1 سال کے لیے, اور وہ ایک امریکی خاندان کے ساتھ رہتے ہیں. اچھا. تو so they live with a host family during the year that they study there. یہ ایک پروگرام. تو گلوبل یو گریڈ یہ دوسرے پروگرام ہے, یہ انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ کے لیے. عام طور پر گلوبل یو گریڈ صرف 1 سیمسٹر کے لیے. تو
सिर्फ 4 या 5 महीने के लिए। हमारे ग्रेजुएट स्टडी के लिए हमारे पास ये फुलब्राइट प्रोग्राम है। ये पाकिस्तान का प्रोग्राम दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है और आमतौर पर हम 250 तलब इल्म अमेरिका पे जाते हैं। तो फुलब्राइट इज़ फॉर मास्टर्स या PhD तलब इल्म के लिए। तो एक मास्टर स्टूडेंट 2 साल के लिए जाते हैं, लेकिन एक PhD स्टूडेंट 5 साल के लिए जा सकते हैं। सही। लेकिन इसके अलावा हमारे पास बहुत मुख्तलिफ प्रोग्राम है। सूसी प्रोग्राम ये एक बहुत छोटा प्रोग्राम, ये 6 हफ्ते के लिए वो नौजवान लोग के लिए। तो वो लोग जो 18 से 25 साल तक इस प्रोग्राम पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और आमतौर पर ये लीडरशिप के बारे में, कभी कभी पब्लिक पॉलिसी के बारे में, लेकिन वो सिर्फ 6 हफ्ते आमतौर पर गर्मी समर वेकेशन के दौरान जाते हैं। ठीक है। फॉर प्रोफेशनल पीपल हमारे पास एक दूसरे प्रोग्राम, द इंटरनेशनल विजिटर्स प्रोग्राम, और आमतौर पर ये this is for professional people who are working usually when they've been working in their field for 5 to 15, 20 years. हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिससे वो अपने counterparts से मिल सकते हैं. So, for example, for a journalist, a program that oftentimes we'll send a group of journalists, Pakistani journalists, to the U.S. We'll arrange for them to go to 2 or 3 cities, and during that time they'll meet with people from the newspapers. They'll meet with people who work in radio, television, internet, to see the different variety of journalism. They'll see how people report, and they'll read about reports. So it's ye ek kisam ka program hai, but it's obviously it's not limited to journalists. That's just one example. We do it for people who work in different fields in the government, that work in the private sector, and basically the idea is to try to introduce Pakistanis to their American counterparts, develop a relationship that we hope lasts beyond just the exchange, so that you're not just there for 2 to 3 weeks. You then have this person who you can turn to in the future, you can work with. And the wonderful thing I think about all of our exchange programs is that there are 2 goals for us. The first is that when we're sending Pakistani students, Pakistani professionals, anybody, you're going to the US and you're representing your country. Yes. And for so many people in the United States these days, the image of Pakistan comes from the news. And I can tell you, after having lived here for 2 years, the image you see in the news in the United States versus Totally the reality, different. completely different. Yes. And so the first goal that we hope to achieve by sending students like Shandana and Fahan to the US is, look at them. These are peace-loving, wonderful students. They're bright, they're hardworking, they're talented. They represent Pakistan. This is Pakistan. True that. It is not what you're seeing in the news. And I think that's one of the most important things we're doing by sending over 1,000 people. 1,000 people then flag out and meet. I mean, think of how many people. Shandana, how many people do you think you met during the course of your semester? Maybe 300 people. So imagine that if 1,000 people are meeting at least 300 people, and some people are doing a PhD, so they're there for 5 years, or they're there for 2 years on a master's program, or they're in one of these international visitor programs where we're purposely setting meeting after meeting after meeting. The effect is that people start to learn and see the real side of Pakistan. Right. The second goal for us, and the great thing is that when people come back, they come back and say, do you know, actually America is not that different. You know, they have family values there. They actually are quite a religious people. They have some of the same values that we share in Pakistan, so do they. They give love to the Pakistani people. They Lot of love. Oh gosh, when these guys leave, the people are oh my gosh. And our students who live with the host families, we have stories. I mean, we had a host mother who came last summer to visit the student who lived with her, because she missed him so much. And she was from a small town and said, everywhere I go, people say, where's Irfan? How's Irfan doing? Have you heard from Irfan? She said, I've lived in this town 30 years, my whole life. Yeah. But everyone wants to know about Irfan. Basically, it's all same everywhere across the globe, because I've been to Japan, and when I left the place, my host mom was crying like anything because my daughter's leaving, blah, blah, blah. And, it's the same story, just that somehow we're perceiving things just on the base of what we're told in newspapers and all. Right. There's one question that, are there any age limitations regarding exchange students and all, like you have to be under 30, or you have to be under 40, or you have to be under 20 for some particular courses and all? For some of the programs. So yes is limited to high school.
Global UGrad is limited to undergraduate, and SUSI is limited up to age 25. The Fulbright program, you can be 70. The Fulbright program is based on merit. Fulbright program, as far as I know, is it a scholarship? It is a scholarship. It is a scholarship, and you can apply at any age. You can apply at any age. All right. So Fulbright will have, and the information, if you want information about that, you can get that from the United States Education Foundation of Pakistan, and their website is usefpakistan.org. And students, anyone can register with this website, register with the United States Education Foundation of Pakistan, and what they can do is register to have a student advisor who can help you with all the programs. They can help you navigate the scholarships and what's available, and all of that. The best part is all of that is free. So for that one, there's no age limit. For the International Visitor Program, there's no real age limit. It's for some of the ones that are specific to a certain age group when you're studying. Yes, there is. For high school, we're not going to send a 25-year-old to an American high school. Pretty much obvious. Pretty much obvious. Yeah. So there is another question, and that is, for instance, you're applying for a scholarship. What's more important? Like, I've heard that there are people who are confused about we should do TOEFL, we should do IELTS, we are going to go do this GRE thing. So right. Which is the best? I mean, I'm just a layman here. Okay. I have all experience regarding Japan, so I can tell you about the Japanese process, but I cannot tell you about the US, so you need to tell me so that our listeners can also know about this thing. For the U.S., for the programs, it does vary. So, for example, the GRE is a test that you use for postgraduate studies. So that's after you've completed your bachelor's. So you wouldn't need the GRE for the Global UGrad program. The TOEFL is to show and demonstrate your level of English. That tends to be required for... Did you guys do that for Global UGrad? TOEFL? Yeah. TOEFL, yeah. Okay. That tends to be required for that program. The YES program for high school students... I'm not sure. I don't think they need to have TOEFL for that because the purpose of that program is actually to teach them English and to help them. And my goodness, they really come back with amazing English skills. So that one is not required. It would be for the Fulbright. For the International Visitor Program, the one that's administered through the embassy for professionals, now we'll set you up with a simultaneous translation in Urdu if we want you to go. Perfect. So, yeah. Thank you. A question just popped up in my mind. A lot of universities and campuses in Pakistan, they've got this rumor going around for quite a while now, and I just wanted to clear the air. And a lot of people are saying this, that if you go on an exchange program, for instance the USEFP, your chances for the Fulbright are significantly reduced. Is this true or not? This is not true. I would say that if you were to go on the SUSI program, your chances for Global UGrad are reduced. If you go on the YES program, possibly your chances for Global UGrad would be reduced. But the Fulbright program is based entirely on merit. And in fact, from some of the other programs, what we really try to look at, for example, with the YES program, with Global UGrad, we want diversity. We want applicants from all over Pakistan. We want them from different socioeconomic levels, which the English requirement for Global UGrad can make that a bit difficult. With YES, we really have struck out and found students from some really rural areas of Pakistan who are now going to go to the U.S. to study. So for those, if you've had experience in a program, then it can cause you to perhaps not be accepted to another. But Fulbright is 110% merit-based. So if you did Global UGrad and then you had amazing scores, you got into Columbia and you rocked the GRE, wow, you're going to go, you're going to get Fulbright scholarship. So it doesn't make a difference if you... Not at all. Okay. Do you mind repeating the site or website again, the page? Because there are people who are asking about this. Certainly. It's USEFPakistan.org, and it stands for the United States Educational Foundation of Pakistan. All right. Thank you so much. Right. Jimmy, one more question. I know आप थोड़ा सा थक भी गई होंगी, आपका थोड़ा सा वो पता भी चल रहा है कि सांस आपका फूल रहा है, इतने ज़्यादा हमने आपसे कहते बैक टू बैक क्वेश्चंस पूछे हैं. यस प्रोग्राम का आपने जिक्र किया और आपने कहा कि वहाँ पर जाकर एक फैमिली के साथ आप अटैच होते हैं और वहाँ पर एक साल उनके साथ रहना. तो अमेरिकन फैमिलीज़ की तरफ से कभी आप लोगों ने कोई सर्वे किया कि उनकी तरफ से क्या आप लोगों को फीडबैक मिलता है जब पाकिस्तानी स्टूडेंट उनके पास जाके ठहरता है, और अभी तक की क्या आप लोगों ने कभी कोई रिसर्च वगैरह की इनके बारे में, फीडबैक मंगवाई? एक रिसर्च नहीं बनाते हैं, लेकिन आमतौर पर अमरीकी खानदान जो एक पाकिस्तानी तालिब इल्म से घर में who host a पाकिस्तानी स्टूडेंट, वो हमेशा एक और तालिब इल्म चाहते हैं. ये आमतौर पर एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस सब लोगों के लिए, and they're always very very happy.
we have repeat families, and it's a very funny thing because you become so attached. And they say that they have this new student that turns up, and by the end they're just crying and so upset when they leave. But then they think, well, I want to do this again, and they do it because also for their own children. Their children get to meet someone from another part of the world, and it becomes just a really, really great experience for them. So, generally the response is incredibly positive. Right. I was going through the whole, we've been grilling through in the past 1 hour. We've grilled you in a lot of questions, but on just a lighter side, you mentioned, Sahar mentioned you've been to Consular, right? Have you visited any other heritage sites in Pakistan? Have you, for instance, have you gone to Lahore? Have you gone to any mosques? The Badshahi mosque, for instance, just any other experience, because people love to know if you've got foreigners, as in we've been talking about how our students went to San Francisco, Hollywood, California, so we'd love to know the places that you guys have visited. I've been to Lahore, but unfortunately I wasn't able to get to the Badshahi mosque. That's sometimes it can be a little difficult for us with the embassy and the consulate, and I've also been to Karachi and been to Muri and to Taxila as well. Which is the best place you've been to or you've enjoyed the most? I really want to go back to Muri, but I think that's because it's getting really hot here. That's the only reason. It's not going to get any better in the next couple of months. Sure thing. Enjoy the hot weather here. Okay, Sarah, what about you? Any place you've got in mind that I have to visit this before I leave? Well, yeah, absolutely. The northern areas. I mean, I want to go to Skardu. I was waiting for that. I was waiting for that. If I could, I'd go everywhere. I want to go to Kashmir. I want to go to Swat. I mean, I want to go everywhere. I've been to Lahore on this trip, but unfortunately, like Jamie said, we are a little bit restricted in where we can travel. But I visited as a child, and it's a very fond memory of mine. I've been to Karachi as well as a child, and so I've enjoyed those places because you go with family and you have those really wonderful kind of outings, and you have a picnic, and so it's been lovely. But as an adult, I'm really, really eager to get up north. If you guys think Islamabad is beautiful, you should certainly visit our northern areas, places like Rush Peak, Fairy Meadows. It's completely green, especially Kashmir, and they're actually pretty safe as well. So that shouldn't be a concern. But you guys should heads up. It's northern areas. They're beautiful. They're very beautiful. I'd love to do that. That would be before we go. And I think the hard thing too is always with us with the winter, because I know for the last few months we're like, oh, you can't go right now because the flights. You never know if it's going to snow. It could snow through April. Very right. So, but flights now is are the time to cancelled, go. and you're supposed to wait for hours and hours and hours there. राइट अभी हमारे पास जो है वो चंद समय बाद हमने न्यूज़ ब्रेक की तरफ भी जाना है, जहां पे हमने बिल्कुल साहर से पूछा, जिमी से पूछा कि उनको पाकिस्तान में कौन कौन सी ऐसी जगहें अच्छी लगी हैं. इसी तरह हम शंदाना से और फरहान से भी पूछना चाहेंगे कि अमेरिका में आपने कौन सी जगह को सबसे ज्यादा एंजॉय किया. फरहान ने तो वैसे अभी मेंशन भी किया था कि सैन फ्रांसिस्को जो है उन्हें पसंद आया. शंदाना, आप क्या कहेंगी? मैं ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट दोनों तरफ गई हूँ, लेकिन अगर देखा जाए मुझे ईस्ट कोस्ट ज़्यादा पसंद है, लेकिन अगर सिटी देखा जाए तो मुझे सैन डिएगो पसंद है जो वेस्ट कोस्ट में है. सो इट्स काइंड ऑफ वजह क्या? उन्होंने तो वजह बताई कि इकोनॉमिक, उन्होंने वजह बताई थी कि इकोनॉमिकली सैन फ्रांसिस्को में आपको हर तरह का के लोग मिलते हैं, तो आपको क्यों सैन डिएगो ज़्यादा पसंद है? बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा. It's just natural beauty. Beautiful. Yeah, I mean, if you call a beach natural beauty, it is. मतलब white sand or blue water, and it's just beautiful. Wow, sounds like a dreamland. It is a dreamland. It is so beautiful. और जो उसके जैसे ही आप बीच से बाहर आते हैं, वहाँ पे जो खूबसूरत like जो भी buildings हैं छोटी छोटी, they're not really tall उस part में, वैसे तो हैं, लेकिन वो बहुत खूबसूरत हैं, and clean roads and everything, और बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा. मैं जरा छोटा सा अपने मतलब का सवाल पूछना चाहता हूँ. कोई सेलिब्रिटीज देखे वहाँ पे? That's a very good question. The Rolling Stones, U2, Jimmy Bono, I mean, LeBron. पहले तो ये कि मैंने घर सबके देखे, which doesn't really matter क्योंकि they're all like houses, so like वो celebrities नहीं हैं. Ask me. सैन डिएगो के लोग भी बहुत प्यारे हैं. I'm feeling it right now. I think MTV Cribs पे तो मैंने सबके घर देख लिए. फरहान, आपने ये जो अभी लास्ट में कमेंट दिया इसके बारे में हम बात करेंगे, और ये हम न्यूज ब्रेक के दौरान बात करेंगे. लिसनर्स, आप तक ये बातचीत नहीं पहुंच पाएगी. बहरहाल इस वक्त न्यूज ब्रेक है. न्यूज ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे. स्टे ट्यून टू FM 101. This is FM 101. Karachi, Lahore, Islamabad, Faisalabad, Quetta, Peshawar, Hyderabad, Sialkot and Multan.
the biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above FM 101. For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan. जी लिसनर्स वेलकम बैक और ये खुसूसी प्रोग्राम आप सुन रहे हैं 3 बजे से लेकर 5 बजे तक और आज हमारे साथ मौजूद है जैसे कि हमने अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में भी बताया था यूएस एम्बेसी से मौजूद हैं और दोनों खवातीन मौजूद हैं सहर हमारे साथ मौजूद हैं और इसके अलावा जेमी हमारे साथ हैं और इसके साथ साथ कल्चरल एक्सचेंज के तहत जो 2 स्टूडेंट्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में से विजिट करके आए हैं वहां पर 5 to 6 मंथ्स जो हैं वो वहां पर गुजारे हैं इन्होंने कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा वो हमने कोशिश की है इन 60 मिनट्स में जो है वो आप लोगों तक पहुंचाया जाए टाइम टू टाइम हम सहर से और जेमी से आप लोगों के जो मुख्तलिफ सवालात जो मुख्तलिफ क्यूरीज आपके ज़हन में आती हैं वो भी हम टाइम टू टाइम इनसे पूछ रहे हैं 4471 पर कुछ मैसेजेस हमारे पास हैं उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जेमी लोगों ने आपकी उर्दू बोलने के जो अंदाज है उसको बहुत पसंद किया और आपको बहुत सारी अप्रिसिएशंस मिली हैं बहुत शुक्रिया देयर आर लॉट ऑफ मैसेजेस हियर ऑन माय स्क्रीन इसके अलावा मुस्तफ़ा खान हमारा साथ दे रहे हैं प्रोग्राम इनको अच्छा लग रहा है उन्होंने कहा वेरी इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम थैंक यू वेरी मच शुमाइला ने रावलपिंडी से हमें 4471 पर मैसेज किया और उन्होंने कहा है कि मैंने भी अपने डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड किए थे इस इंटरनेशनल स्कॉलरशिप में ये सिर्फ इन्होंने अपना एक कमेंट भेजा है शुमाइला अगर आप डिटेल में हमें थोड़ा सा बता दें कि आपने इसके लिए क्वालिफाई किया नहीं किया या आप कोई सवाल हमारे गेस्ट से पूछना चाह रही हैं तो वो अगर डिटेल में हमें लिख के भिजवा दें सिर्फ डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड किए आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये आपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर नहीं किया है साथ साथ में जनाब सहर आपके हवाले से जो है वो एक मैसेज हमें आया है और उन्होंने कहा कि आपने अपने प्रोग्राम के आगाज में मेंशन किया है कि आपके फादर मरी में जो है वो कॉलेज में पढ़ते रहे हैं तो उसके बारे में हमें बताएं कि कहाँ पे और क्या एक्सपीरियंस था आप अपने फादर से कुछ स्टोरीज सुना करती थी इस हवाले से Well, he was very young when he went, actually. My dad is actually from India. Achha. And my grandfather was working in Kuwait. And so they wanted to put my dad in a good school. And I had a great uncle, I think, who was working in the diplomatic corps, and he suggested Lawrence College. So my dad went for a couple of years, and he really liked it. He said it was really beautiful up there. And he hasn't told me so many stories about it, but he ended up leaving and going to the UK because of tension between the two countries. So it was safer for him elsewhere. सही जेमी एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी और हमारे साथ कॉलर भी थे न्यूज ब्रेक 4471 के साथ साथ 111000101 पे भी कॉलर्स जो हैं वो हमारा साथ दे रहे थे और अब लिसनर्स आप लोगों की कॉल्स को भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे जेमी सवाल था हमारे साथ कॉलर थे रावलपिंडी से और वो पूछना ये चाह रहे थे कि ही इज फ्रॉम अ पुअर फैमिली और वो कह रहे थे कि अगर मैं इन प्रोग्राम्स में अप्लाई करना चाहूँ या पुअर फैमिलीज के जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या उसका तरीकाकार है कितनी लागत इन तमाम प्रोग्राम्स पे आती है तो ये सवाल मैं भी आपसे पूछना चाह रही थी कि ये कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स जो हैं आर दे फ्री ऑफ कॉस्ट या इसको अमेरिकन गवर्नमेंट सपोर्ट करती है या पाकिस्तानी खुद जब ये प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको कोई पेमेंट देनी पड़ती है इसके बारे में बताइए ठीक है लेकिन सारे प्रोग्राम मुफ्त है और के अमेरिकी हुकूमत सब कॉस्ट के लिए अदा करते हैं लेकिन इसके अलावा USCFP का सर्विसेज भी बिल्कुल मुफ्त है तो हम चाहते हैं कि अगर एक शख्स एक गरीब खानदान से
आते हैं, कोई मसला नहीं. हम चाहते हैं कि वो लोग एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें. और इसके अलावा वो लोग जो USCFP काम करते हैं वो इस तालिब इल्म को बहुत मदद कर देते हैं, बहुत एडवाइस कर देते हैं. तो there should be no trouble. He really should consider applying. And the financial situation of somebody is not an obstacle to the programs. All the costs are covered. In fact, Shandana, you can explain with, for example, the Global UGrad program, everything from your flights, your visa. When you get there, you have a spending account. मतलब एम्बेसी में भी जो फीस होती है वो नहीं देनी पड़ती है, सिर्फ उनको पासपोर्ट अपना खुद बनवाना पड़ता है, बाकी तमाम जो प्रोसीजर है सिर्फ पासपोर्ट you do your passport. और वो लोग जो ग्रेजुएट स्टडी करना चाहते हैं तो अगर क्योंकि GRE बहुत महंगा एग्जाम है, लेकिन अगर आप USCFP से काम करते हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं तो USCFP आपको ये एग्जाम they'll give it to you for free. They'll pay for you to take the GRE even. So it's a really fantastic program. It's meant to be inclusive. हम चाहते हैं कि सब पाकिस्तान जाते हैं. We want the students that we send to represent all of Pakistan to the degree that we possibly can. Commendable indeed. And even जो TOEFL होता है जब अंडर ग्रेजुएट के लिए जाते हैं तो TOEFL की जितनी भी अमाउंट्स हैं वो भी कवर होती हैं, not only GRE but everything. Right. So we have a caller as well और हम इनकी भी बात सुनते हैं, ये हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं. 1110011 पे लिसनर्स आप हमें कॉल कर सकते हैं, 051 का कोड लगा लीजिएगा अगर आप इस्लामाबाद रावलपिंडी के बाहर से कॉल कर रहे हैं. मीनवाइल मेरे ख्याल में के कॉलर जो हैं वो जी हमारे साथ हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं और कैसे? जी मैं बिलाल बात कर रहा हूँ मरदान से. अच्छा बिलाल, कैसे हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. आप लोग सब बहुत खूबसूरत है. थैंक यू सो मच. एनीथिंग और कुछ कहना चाहेंगे? सुन रहे हैं आप हमारा प्रोग्राम अभी का? अभी आप हमारा शो सुन रहे हैं? नहीं 2 दिन हो गया. ऑलराइट, सुन रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. जी लिसनर्स, और बिल्कुल जनाब आप के पास एक अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. इस वक्त यूएस एम्बेसी से हमारे पास मौजूद हैं ऑफिशियल्स, और अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक्सचेंज प्रोग्राम्स में अप्लाई करना चाहते हैं या आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में विजिट करना चाह रहे हैं, वो तमाम जो आपके अगर प्रॉब्लम्स हैं, कोई क्वेरीज हैं आपके जहन में, तो आप डायरेक्टली जो है वो कॉल करें 1110011 पे या 4471 पर अपने टेक्स्ट मैसेजेस भेजें. facebook.com/FM101 पाकिस्तान ये हमारा ऑफिशियल पेज है, इसके जरिए भी आप प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं. और इलियास अफरीदी, आपने हमें कॉल किया था रावलपिंडी से, और जो सवाल मैंने अभी जेमी से पूछा था कि जो अगर आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर पाती है तो आप किस तरह से जो है वो इस प्रोग्राम के लिए अहल हो सकते हैं, या इस तरह के बहुत सारे और जो कैंडिडेट्स हैं अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं. सो जनाब बहुत डिटेल में जो है वो जेमी ने इस हवाले से बताया है. सो बिलाल अभी हमारे साथ थे मर्दान से, ये हमारे साथ दे रहे थे. और ऑफिशियल पेज पर कुछ मैसेजेस हैं आपके पास? नहीं, not yet. I had a few. I forgot to ask a question when we were doing the previous thing on the exchange programs. A lot of students apply. It's gaining recognition. It's gaining popularity. A lot of students from all across Pakistan, they apply for this exchange program. However, you've got a limited number of seats and you can only entertain a few amount of people. So what do you think students should concentrate on? Because in Pakistan and India, the thing is, we as students put a lot of emphasis on grades, and we miss out on a lot of other opportunities to, make up if, for instance, we can make it through our grades. So in your selection process, what do you guys focus on? And for instance, students like Farhan and Chandana, what did they do to make themselves stand out from the crowd? Well, I'll leave that to Farhan and Chandana, what they did to stand out. But generally, in terms of what we're looking for, the Global UGrad program is incredibly competitive. This year, इस साल में हम 2000 application हासिल किया, और जिससे हम सिर्फ 4000 application और सिर्फ 200 तालिब इल्म अमेरिका पे जा सकते हैं. So of that, so या सिर्फ 5% सब applicants से अमेरिका पे जा सकते हैं. I think when we are looking at applications, we're looking for students who are going to be open to the experience. You want someone with strong grades. You want someone who is going to be hardworking, but you also want someone who will be able to represent Pakistan well. We're looking for people who have a good personality, who are open and they're friendly, people who will be ambassadors for their country. जब वो अमेरिका में हैं.
So that you basically judge us from the interview? That's from the interview. So the initial step, the first step that you go through is you send an application in. They go through the applications and look through who they think their strongest candidates are. And of the 4,000, I'm not sure exactly how many get called for an interview, but they interview a significant number. And from there, at that point, everybody is kind of equally qualified. Everyone writes well. Everyone's a good student. Everyone is doing, comes from an interesting background. And then it's the students, their personalities, how open they are to the experience. Right, we have a caller. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम जी, तारुफ करवाइए अपना. अरुण बात कर रहा हूँ सवाल से. जी, क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप? मैं ये सवाल मैडम पूछना चाहूँगा कि हम किस तरह इसके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं कि हाउ वी कैन कांटेक्ट विद देम, कि हम इनके दफ्तर का या किस तरह कोई कांटेक्ट नंबर या क्या क्या प्रोसीजर हम जिसके थ्रू हम इसके साथ कांटेक्ट करें. ठीक है, आपने सिर्फ एक काम करना है, अपने पास पेपर और पेन रखिएगा और ऑन एयर सुनिएगा, अभी आपका जवाब दे देते हैं सवाल का. ठीक है? अच्छा, एक मिनट में जरा रेडियो ऑन. ठीक, ओके, अल्लाह हाफिज. जी जनाब, सवाल हमारे पास ये आया है कि आप लोगों के साथ किस तरह कांटेक्ट किया जा सकता है. कोई ऑफिस है, कोई ऐसा एड्रेस बताना चाहें कि जिसके जरिए आपसे कांटेक्ट किया जा सके. और मेरे ख्याल में अब तक उनके पास पेपर पेन उन्होंने ले लिया होगा. और अब हम चाहेंगे कि जेमी आप और सहर आप बताइए कि किस तरह आप लोगों से कांटेक्ट कैसे किया जा सकता है. The best way to get a hold of the consular section or to find out more information about visas is to visit the embassy website, islamabad.usembassy.gov, and go to our visa section. All of our contact information is there, phone numbers, email addresses, and if you have any questions, if it's not answered on the website, send an email or give us a call and we'll go ahead and respond. सही जेमी, मैं चाहूंगी कि ये तमाम बात आप उर्दू में करें. अगर आपके पास कोई सवाल तो एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में है तो आप USEFP का वेब पेज पे जा सकते हैं. एंड द वेब पेज is usefpakistan.org. तो अगर आपके पास कोई सवाल वहाँ जाइए और वहाँ बहुत मालूमात एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में हासिल कर सकते हैं. Right. जी. All right, we have a caller here on Skype as well. So, Assalamu alaikum. हाँ जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं? Alright, कमर, आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है. Thank you. मैं आपका प्रोग्राम लाइव सुन रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे थोड़ी सी मालूमात चाहिए थी कि ये जो इन्होंने बताया कि अमेरिका में अगर कोई जाना चाहे इधर तालीम हासिल करने के लिए, मेरा भाई है मैट्रिक के बाद का कोई प्रोग्राम ऐसा है उसके आगे मुकम्मल तालीम अमेरिका में कोई ऐसा प्रोग्राम है तो मुझे इसके बारे में थोड़ी सी. Alright, आपका क्वेश्चन हमने सुन लिया है and we are going to answer you. आप प्लीज सुनते रहिएगा. Thank you for calling. So the question was कि the guy finished his matriculation here at the 10th grade, और वो अगर अपनी स्टडीज को अमेरिका में आगे प्रोग्रेस करना चाहें तो what should he do? Is he eligible to apply for? उनके लिए कोई प्रोग्राम है जो मैट्रिकुलेशन जिन्होंने की हुई है उनके लिए कोई कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम या स्टडीज के लिए कोई ऐसे आप लोगों ने तरतीब दिए हुए हैं? After high school. After high school, yeah. The best thing to do is to go online and start searching for programs in the United States that you're interested in. If you want to look into a specific major, look at different schools in the United States that offer that major, and then research those schools. And if you've decided to find, or if you decide that you found a school that you like, submit your applications. And that's the best way to go about doing your undergraduate degree in the United States, is starting your search online for the different programs and schools that are available in the States. Right, thank you. And Jamie, I have another question. Okay. Can I just give him another? Sure, please. Just go ahead. recommend that he also, you can register with the U.S. Education Foundation in Pakistan with a student advisor, or with an education advisor. The education advisors can help you research schools, they can help you research programs, and they can help you research scholarships. So while we're talking about exchange programs, that's one way of going to the U.S. to study for free, but there are scholarships also available. Right, we have a caller as well. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी. कौन हमारे साथ है, तारुफ करवाइएगा.
up now? मेरा ख्याल में इनकी जो कॉल है वो प्रॉपर्ली हम तक नहीं पहुंच पा रही है, कुछ सिग्नल्स का प्रॉब्लम है. बहरहाल लेसेस 1110011 पर अब आपकी कॉल्स हम अपने प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं. अगर आपके जहनों में कुछ सवाल है तो 111-000-151 का कोड लगा लीजिएगा अगर आप इस्लामाबाद रावलपिंडी के बाहर से कॉल कर रहे हैं. जी. So you were talking about the grades and academics कि उसके अंदर आपकी अगर marvelous performance है and you've been extraordinarily good, then you'll be called for an interview. I was just wondering कि there are students who are too good in co-curricular activities and all. So will that count as well? If you were good in something like, you know. I think so. लेकिन आमतौर पर हमारे exchange program अगर एक शख्स comes from a family who could easily send him to the US or send her to the US to study and pay for it themselves, regardless of their grades or performance, they may not for the UGrad program or the YES program be very competitive. All right. Because we want to try to give an opportunity to someone who perhaps wouldn't have had the opportunity to go study there. They can अगर आप बहुत curricular activities, extracurricular activities और बहुत अच्छी grades हासिल करते हैं तो yeah, you would be very competitive for the program. Oh, so, okay, fine. Right, we have a caller. Assalamu alaikum. अस्सलाम वालेकुम जी. जी तारुफ करवाइए. जी जावेद बोल रहा हूँ. जी जावेद साहब कहाँ से कॉल कर रहे हैं? जी मैं इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ. अच्छा मैडम एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इसमें अपने प्रोग्राम में ना वक्त टाइम टू टाइम उसमें ईमेल एड्रेस का कंफर्म करवा दीजिए. और दूसरा ये है कि इसके अपना क्वालिफिकेशन जो है मैक्सिमम अपना मिनिमम जो है वो क्या है, एसएससी है, ग्रेजुएशन है या ये क्या क्वालिफिकेशन है, ये प्लीज जरा आप आने बाद में कर दें या अभी बता दें. ठीक है. ईमेल एड्रेस आपने कहाँ का पूछा है? ये प्रोग्राम में इंफॉर्मेशन कर दिए ना. ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका. अब सुनिएगा, ऑन एयर आपको बताते हैं. जी, ईमेल एड्रेस आप अपना बता दें कि जिस पे आपको ईमेल के जरिए कांटेक्ट किया जा सके. और इसके साथ साथ जो है सेकंड सवाल इनकी क्या रिक्वायरमेंट, मिनिमम एजुकेशन जो है वो कितनी रिक्वायर्ड होती है इसके लिए? तो एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए या स्टडी के लिए? स्टडी के लिए. If you go to our website at islamabad.usembassy.gov, all of our different email addresses are there because we have several different sections within the consular section, so you can get the email address from there. And prerequisites, it depends on what kind of program you're going to, but at the very, very minimum, school transcripts, you should have your school transcripts from whatever education you have. You should be accepted to a school in the United States, and you should be able to show that you have the finances to pay for the schooling if you're applying for a non-scholarship-based program, or even if you have gotten another scholarship not from the U.S. Embassy. Right. You please, show that documentation. And lastly, it's really important to show what are your plans after school. Will you come back to Pakistan and work? Will you further your education? Why will you come back to Pakistan? What do you intend to do? अच्छा सहार, आप क्योंकि खुद वीज़ाज़ इशू करती हैं, आप खुद वहाँ पे ऑफिसर हैं और मुख्तलिफ किस्म के लोगों से अभी तक आप इंटरेक्ट कर चुकी होंगी. क्या बेसिक प्रॉब्लम सामने आता है जब एक स्टूडेंट आपके पास आता है और आपको इंटरव्यू दे रहा होता है लेकिन एक मेजर गलती करता है, तो ऐसी क्या चीज़ है? क्या आप बताना चाहेंगे कि स्टूडेंट जब आए तो उनको किन किन चीज़ों के ऊपर होमवर्क करके आना चाहिए? I have to say the biggest issue that we see is students aren't prepared. They don't have those documents that I said. And we don't base our information off of documents, but there are certain ones that are important. Your school transcripts and your I-20 form, please bring those if you're a student. I mean, they're just so important. We want to see what your educational background is, and we want to see that you've been accepted to a school. और इसके अलावा मतलब डॉक्यूमेंट्स के अलावा कोई ऐसा प्रॉब्लम जो आप मेंशन करना चाहें जो ऑलमोस्ट आपको जब आप बैक टू बैक ले रही होती हैं, इंटरव्यूज ले रही होती हैं तो आपके सामने आता है? Well, that's the thing is that language matters. क्या मतलब English important होती है नहीं होती, इसके बारे में भी? That depends. If you're going to a program, a master's program, and you're studying biology, you probably should be able to speak a good level of English. Right. If you're going there for an English program, your I-20 will say this person is going to learn English, and then we don't have an expectation that you'll be able to read Shakespeare and translate it into Urdu. I mean, right.
expectation for English language ability is variable depending on the kind of program the person is going to. And if you are going to a program that is an English-speaking program, try and take the TOEFL to show us your level of English. Right. So we have a caller as well. Assalamu alaikum. वालेकुम, क्या हाल है आपके? जी बिल्कुल ठीक ठाक. आप क्या सवाल पूछना चाहेंगे हमारे मेहमानों से? एक्चुअली सबसे पहले तो वेलकम टू पाकिस्तान, और सेकंड मैंने इनसे ये पूछना था कि अगर एक स्टूडेंट मतलब 6 ईयर्स में छोड़ दिया स्कूल, ठीक है, और वो सारी क्वालिफिकेशन मतलब वो पूरी नहीं कर सकता, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अभी जॉब कर चुका हूँ, एक कनाडा का कॉल सेंटर है, मैं 3 साल जॉब की है, ठीक है. अच्छा. मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर इतनी हाई क्वालिफिकेशन ना हो, जी, भी हम जो वहाँ पे पढ़ाई करना चाहें या कुछ ऐसा प्रोग्राम हो जो हम कर सकें, तो इसके बारे में आप कुछ थोड़ा गाइड. आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है? एक्चुअली मैंने 6 से छोड़ दिया था ना स्कूल, तो उसके बाद मैं जॉब कर रहा था, एक कैनेडियन इंग्लिश कॉल सेंटर है. अच्छा. और उसमें तकरीबन 3 साल जॉब की है, फिर 2 साल मैंने यूफोन में जॉब की है. अभी ठीक है, आपके सवाल का जवाब अभी देते हैं. उनका नाम क्या है? नाम अपना दोबारा बताइएगा. शेख वकास बात कर रहा हूँ. ठीक है, थैंक यू वेरी मच शेख वकास. Waqas has studied up till the 6th grade. However, due to some difficulties, he had to work, and he's had significant work experience in significant firms. So he said now his education is still incomplete. So is it possible for him to apply for any program, if so ever? It would depend on his age, but I don't think so. Okay. Because at least the exchange programs that we're talking about would all be at a level above where he completed his last studies. Mm-hmm. So, for example, the YES program is for matriculation age. The Global UGrad is an undergraduate program. And to qualify for both of those, you need to have the previous... You mentioned Fulbright does not have any... Fulbright doesn't have an age limit, but it does have the requirement of having a bachelor's degree. Bachelor's degree, yeah. Yes, and you have to be accepted to... If he were to apply and be accepted to a master's program or a PhD program, then he could be considered for Fulbright. But that would be extremely difficult, if not impossible, without having a bachelor's degree. बिल्कुल शेख वकास, आपको बताते चले भी जिमी इसी हवाले से बात करनी थी कि अनफॉर्चुनेटली आप शायद इसके लिए अप्लाई ना कर पाएं, क्योंकि अभी आपकी जो एजुकेशन है वो काफ़ी कम है, और क्योंकि अभी जो प्रोग्राम्स, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स बताए गए, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम और सर्टन और जो जिनके बारे में भी हम प्रोग्राम में जिक्र कर रहे थे, उसके लिए कम से कम आपके पास मैट्रिक की डिग्री होना ज़रूरी है, और उसके बाद जितने बाकी प्रोग्राम्स हैं वो हाई स्कूल के बाद के प्रोग्राम्स हैं. सो उसके लिए जो है वो थोड़ी सी क्राइटेरिया जो है वो आप उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं. कोशिश कीजिए कि अपनी एजुकेशन आप कंप्लीट कर लें, और उसके बाद जो है टाइम टू टाइम आप यूएस एम्बेसी की अगर वेबसाइट है उस पर जाकर आपको मजीद जो है वो इस बारे में इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी. वी हैव अ कॉलर एज वेल. जी, इस वक्त कॉलर जो है वो हमारा साथ नहीं दे पाए हैं. 12 लिसनर्स आप प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं 11100101 के जरिए. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. जी, अपना तारुफ करवाइएगा. बिलाल बात कर रहा हूँ मरदान से. जी बिलाल साहब, क्या सवाल आप पूछना चाहेंगे? मैंने मैट्रिक की है, तो अब मैं किस तरह करूँ? आपने मैट्रिक किए हैं और अब आप इस प्रोग्राम से मुस्तफीद होना चाहते हैं जो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं. जी बिल्कुल. ठीक है, चलिए सुनिएगा ऑन एयर. हाई स्कूल इन्होंने अपना जो है वो खत्म कर दिया. Junior high school. It's junior high school. He's done his junior high school. He's completed up till there, and he wants to go for an exchange program. Right. Now, Shandana and Farhan, you guys are undergraduate students already, so this is going to be different from that. Mm-hmm. Yes. So, what options are there? The YES program probably. Yeah. If he's between, the YES program's age limit is up to age 18. Or it's actually age 17. Yeah, I think he's going to make that. Okay. A matriculation student would make that cut. Yes. Like you have to be. आपने मैट्रिक किया होना चाहिए, लेकिन आपकी उम्र जो है वो 18 साल के तक होनी चाहिए. अगर उससे ज्यादा है तो आप एलिजिबल नहीं हैं. What's the duration for the YES program again? The YES program is 1 year. It's 1 year. Okay. I just had a question I forgot to ask you guys. Shandana and Farhan, you guys were allotted your universities by the program, or did you choose it yourself? It was allotted by the program. Did you guys have any preference?
नॉट रियली आई मीन जब हमारा इंटरव्यू हुआ था तो हमें नहीं था पता हमारी कौन सी प्लेसमेंट्स है लेकिन वो जस्ट फॉर फन दे आस्क यू वेयर डू यू वांट टू गो सो वी जस्ट लाइक LA एंड स्टफ लाइक दैट बट और मेरी फ्लाइट से मुझे 2 दिन पहले पता चला था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ. Yeah, he was very unfortunate on that side. मुझे तो महीना पहले पता चल गया था and I was crying Midwest. Spontaneous. Okay. So और उसके अलावा the weather conditions we mentioned कि especially Minnesota you said that it has extreme weather conditions. तो उसके लिए आपको क्या 2 दिन पहले आपने क्या तैयारियां की थी? तैयारियां मिनेसोटा का आइडिया था लेकिन यूनिवर्सिटी का नहीं था. तो बस वो उस हिसाब से फिर काफ़ी कुछ आपको लेके जाना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंज है वहाँ पे. हवा बहुत तेज़ चलती है इवन गर्मियों में भी. तो काफ़ी डिफरेंट है. आपको तैयार होके जाना चाहिए मेंटली भी और फिजिकली भी. कैंसस में एक्सट्रीम होता है. अगर सर्दी होती है तो बहुत सर्दी होती है, गर्मी होती है तो इंतहाई गर्मी. बिल्कुल एग्जैक्टली. तो मुझे ज़्यादा वो नहीं था लेकिन वहाँ पे सर्दियाँ इस दफ़ा बहुत ज़्यादा मतलब बहुत वियर्ड थी. और कैंसस के बारे में ये कहा जाता है कि हर चीज़ पे बिलीव करें लेकिन डोंट बिलीव ऑन द वेदर क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कभी बहुत बेवफा है. तो उसमें ये होता है कि इस बार वहाँ पे नॉर्मली बहुत सर्दी होती है लेकिन इस दफ़ा जब हम लोग गए थे तो वहाँ पे सिर्फ 2 दफ़ा बर्फ पड़ी थी. और तो लेकिन ये है कि सर्दियों में सही सर्दी होती है और गर्मियों के लिए तैयार हो जाए. इस दफा वहाँ पे वो कह रहे थे कि -26 फ़ारेनहाइट -26. तो वो कह रहे थे कि इस दफा इतनी सर्दी नहीं है यार. और मेरी सारी क्लासेस सुबह 8 बजे होती थी. तो आपको इस तरह टफ भी बनाया गया ना वेदर को कैसे फेस करना है. सो वी हैव अ कॉलर. अस्सलाम वालेकुम. जी अपना तारुफ करवाइएगा. मेरा नाम हसान है. मैं रावलपिंडी से बोल रहा हूँ. जी क्या पूछना चाहेंगे आप सवाल? मेरा भी मालूमात करनी थी आपसे कि मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ मतलब बीए लास्ट फाइनल ईयर मेरा थर्ड ईयर में मेरा एक पेपर कंपार्ट है. अच्छा. तो क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि मैं वहाँ जाके कोई स्किलफुल या कोई कोर्स वगैरह में कर सकूँ? आप वोकेशनल कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहे हैं? कोई वोकेशनल हो या कोई मुझे ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि मैं ग्रेजुएशन के बाद मतलब मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ मेरी इंग्लिश थोड़ी सी बहुत वीक है. अच्छा. तो मैं कह रहा हूँ कि मैं कोई जो है ना इस तरह की स्पीच पावर बन जाए या इस तरह की मुझे कोई स्किल के लिए कोई अप्लाई करना पड़े. सही. चलिए ठीक है. ये सवाल जनाब पूछा गया और थर्ड ईयर के हवाले से वो कह रहे थे उनका क्लियर नहीं है और FA उन्होंने शायद कंप्लीट किया हुआ है. He's in his third year of his undergraduate education and he was wondering if in the process of any exchange program he can gain any particular skills that can help him in his career onwards, not just culture but something that will focus on something that he wants to pursue professionally. जी हमारे पास एक प्रोग्राम है. हकीकत में पाकिस्तान में हमारे पास 30 से ज़्यादा प्रोग्राम है. तो जब हम ग्लोबल यू ग्रेड येस और फुलब्राइट के बारे में बातचीत करते हैं इसकी वजह से क्योंकि ये प्रोग्राम सबसे बड़ा है. लेकिन हमारे पास एक प्रोग्राम उसका नाम कम्युनिटी कॉलेज इनिशिएटिव प्रोग्राम और ये प्रोग्राम लोगों के लिए जो जिनके पास एक BBA और bachelor's या associate degree, 2-year bachelor degree या associate degree और थोड़ी सी experience उसके field में है. तो इस प्रोग्राम के लिए ये vocational training के लिए तो मिसाल के तौर पर 1 साल में एक औरत जो पकाने के लिए जाना चाहते हैं तो वो she went on the program and she came back and now she's a chef. I believe she was the chef at the Marriott, one of the restaurants in the Marriott Hotel. एक और शख्स इस प्रोग्राम पे जाते हैं तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और उनके वापस आते हैं और दफ्तर में एक प्रमोशन हासिल करते हैं. लेकिन their program is not so much for students as people who when they recently graduate they have a year or 2 of experience and then they go specifically for a 1-year vocational training. राइट. अच्छा अभी थोड़ी देर पहले साहब ने जो है वो बताया भी था इंग्लिश सीखने के हवाले से भी प्रोग्राम है. वो क्या है जिमी, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बताएं क्योंकि ये अपनी इंग्लिश भी इन्होंने कहा कि इनकी वीक है तो शायद वो इंग्लिश इम्प्रूव कर सकें. तो वो कोर्स क्या है? I don't know if we have any specific ones that are run by the U.S. Embassy, but there are many programs in the United States that offer English training. And oftentimes schools in the United States will
evaluate a student and say, you know what, maybe for your first semester we'll do English training, and then you can continue on with the rest of your course. And I have a feeling that that's something US EFP could help with in that school search that they do with prospective students. We don't have any specific programs, though, that are just that we know target English learners. Right. But we see it all the time that people do go to school, and universities and community colleges as well will offer English training along with the other अगर अभी थोड़ी देर पहले जैसे बात की जा रही थी कि USEFP की अगर वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ से आपको गाइडेंस भी मिल सकती है. वहाँ पर आपको कोई ना कोई अगर आप अपना क्वेश्चन पुट ऑन करते हैं तो आपको जवाब भी आ जाएगा. सही. चलिए जनाब, आपके बिल्कुल सवाल का जो है वो मेरा ख्याल में कि आंसर सामने आ गया हुआ है. आप USEFP की साइट पर जाइए, अपना सवाल वहाँ पर लिखिए, उनको पोस्ट कर दीजिए, और यकीनन आपको जो है वो इंग्लिश, अगर आपने कहा कि आपकी वीक है और आप लर्न करना चाहते हैं और अमेरिका जाकर सीखना चाहते हैं, तो वो तमाम तर जो गाइडलाइन है वो आपको फराहम कर दी जाएगी. 111000101 पर हमारे साथ मजीद भी कॉलर्स हैं, उनसे भी बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम. जी तारुफ करवाइएगा अपना. जी मैं इरफान अंदर बोल रहा हूँ तलागंज से. जी उस्मान, क्या पूछना चाहेंगे? जी मैं पूछना ये चाहूँगा कि मैंने मैट्रिक के बाद 3 साल का एसोसिएट इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया मैकेनिकल टेक्नोलॉजी में. अच्छा. तो उसके बाद मैंने कम से कम 3 साल जॉब की है, और छोटा सा ये प्रॉब्लम है कि 26 एज हो गई है मेरी. तो फाइनली अगर कोई हल है मेरे लिए तो प्लीज मुझे बताएं. किस प्रोग्राम में जाना चाहते हैं? मैकेनिकल में आपने एसोसिएट डिप्लोमा लिया है ना? जी बिल्कुल. ठीक है, चलें. और आप यही इसी को आगे परस्यू करना चाहते हैं? मतलब जिस कैटेगरी में भी आगे मतलब स्टडी मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है तो मैं उसमें अप्लाई करना चाहता हूँ. ठीक है, आप सुनिए, आपको जवाब देते हैं. अच्छा जी, ये पूछना ये चाह रहे हैं कि 3 साल का इन्होंने 3 इयर्स का जो है वो एसोसिएट डिप्लोमा किया है मैकेनिकल में, और वो चाहते हैं कि मैं आगे मजीद जो है वो USA से तालीम कैसे हासिल कर सकता हूँ, मैं किसी कोर्स में फॉल इन होता हूँ या नहीं होता हूँ, और ज़रूरी नहीं है मैकेनिकल, अगर इसके अलावा भी मैं जो है वो कर सकता हूँ, यानी इसके बारे में गाइड कर दीजिए. मुझे लगता है कि उनके लिए शायद हमारे कम्युनिटी कॉलेज प्रोग्राम सबसे अच्छा है, क्योंकि वो एक परफेक्ट कैंडिडेट है. उनके पास डिप्लोमा है, थोड़ी सी एक्सपीरियंस है, लेकिन बैचलर्स नहीं, और उनके ज़्यादा तालीम चाहते हैं. तो सो कम्युनिटी कॉलेज प्रोग्राम आमतौर पर हम जनवरी में एप्लीकेशंस हासिल करते हैं. तो if he can wait and watch, if he goes to the USEFP website, he can receive information. तो USEFP का वेबसाइट में बहुत मालूमात इस प्रोग्राम के बारे में है, और फिर जब वो एप्लीकेशंस हासिल करते हैं तो ये एक एडवाइजरी करेंगे और फिर वो अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम उनके लिए बहुत अच्छा है. अच्छा होगा. बिल्कुल उस्मान, और बिल्कुल जिमी आपको यही बताना चाह रही हैं कि जो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा. जनवरी 2013 में आप जाहिर है कि एप्लीकेशन को रिसीव किया जाएगा, लेकिन टाइम टू टाइम आप USEFP की जो वेबसाइट है उसको जरूर विजिट कीजिए. कम्युनिटी एजुकेशन प्रोग्राम है, उसमें आप फॉलो इन कर सकते हैं. वहाँ उसके तहत जो है वो आप अमेरिका के हवाले से अप्लाई कर सकते हैं. आपके पास डिप्लोमा है जो कि आपके लिए एक मेरा ख्याल में कि प्लस पॉइंट है, एक प्लस अचीवमेंट आपकी है कि जो इसमें काउंट हो सकती है. I had a question. The last time Maggie was here, and when we had questions from the listeners, a lot of people asked regarding work, and a lot of people who had some sort of disabilities. So, are there any chances for disabled people for going on exchange program? Is that going to hold you back? Not at all. In fact, we accept people with disabilities on all of our programs. Mm-hmm. And highly encourage it. So how do you accommodate them, like for instance Braille? अमेरिका में हमारे पास एक लय है, उसका नाम The Americans with Disabilities Act. और इसके एक कानून, इस कानून के मुताबिक हर शख्स और हर जगह हर इदारा एक शख्स को मदद करना चाहिए. So for example, anyone who has any kind of physical disability, if they're blind, they'll make whatever special accommodation is needed so that person can participate in the class to the same degree as a person who can see. Same thing if someone is unable to hear. Same thing if someone is in mobility. And आमतौर पर अमेरिका में जो लोग वो wheelchair में है तो उसके पास बहुत मसला नहीं, क्योंकि आमतौर पर बहुत अमेरिकी इमारतों में तो रैम्प्स है, ऑटोमेटिक डोर्स है, एक खास बाथरूम है,
तो इसकी वजह से तो अगर एक शख्स के पास कोई डिसेबिलिटी तो कोई प्रॉब्लम नहीं Encouraged to होगा. apply. They are facilitated everywhere. Acha, one more thing. You were talking about the Fulbright thing, right? So, uske liye ye hai ki the bachelor's here in Pakistan is 2 years. So, is that considerable? 4 years. 4 years now. The bachelor's of 4 All right. Now, but the people who've done it previously, like काफ़ी देर पहले जिन्होंने किया, because when I was in Japan, I got to know कि जिन लोगों का यहाँ से काफ़ी देर पहले का bachelor's हुआ है, that was 2 years, and they were not eligible there. They were supposed to go there 1 साल वो और पढ़ेंगे, and then they'll move on. Is this the same thing? I'm not sure. Sahar, you want to well, so that's actually been an interesting topic of conversation amongst us officers, we officers who interview. Yeah. Basically, we're used to seeing a bachelor's degree being a 4-year degree, and we are seeing that now. But we do have a lot of applicants that come in with a 2-year bachelor's degree. True. And as long as they have the qualification, as long as they have been a degree has been conferred upon them, and as long as the receiving school in the United States accepts that degree, then it's not really a problem. What if they're having a lot of experience in some other fields, or they've been working for, like, say, a decade, or 2 years, or 5 years, or 3 years? Will that count as well, or it's just based on that particular 2 years degree because they were just there for 2 years in college or whatever? So that's why they're not eligible to apply for it. It all depends on the receiving school in the United States. If the United States institution will accept that 2-year degree, then we're not going to question it and say, no, you need another 2 years. Whereas if maybe you only had a high school education and you were trying to get into a master's degree, we would question that. Pretty much and we would obvious. question the American institution and say, why did you accept this person without What a if they're bachelor's pursuing degree? their master's at the moment? Then will they be eligible, or those credits will be counted or something? So if someone is in Pakistan pursuing a master's degree Yeah. and they wanted to go to the United States and do something else there? No, like they're applying for Fulbright scholarship or something. Will that be possible? Certainly, as Jamie said, once you have that bachelor's degree, you have to present your qualifications for a Fulbright degree. If they're applying to go to another kind of institution, we would certainly ask the applicant, why are you leaving your master's degree to do something else? And we'd want to know more about that. All right, we have a caller. Assalamu alaikum. अस्सलाम वालेकुम जी, जावेद बोल रहा हूँ दोबारा। ये मैडम प्लीज जावेद साहब, आप कहाँ से कॉल कर रही हैं? कहाँ से कॉल कर रहे हैं? ये मैं इस्लामाबाद से ही बोल रहा हूँ, दोबारा मैंने किया है। तो वो इसकी वेबसाइट देंगे एक्सेसमेंट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए। USEFP की वेबसाइट आपको चाहिए? हाँ जी, आप आने जरा अनाउंस कर देना, बोल देना, मैं लिख लूंगा। चलिए ठीक है, हम अभी दोबारा से बता देते हैं आपको। बहुत शुक्रिया जी। जावेद साहब पूछ रहे हैं USEFP की जो वेबसाइट है वो दोबारा से बता दीजिए ताकि वो लिख लें। Sure, it is usefpakistan.org. Again, it's usefpakistan.org. जी, और इसको और इजी कर लें तो आप यकीनन जो है वो सर्च इंजन में जाके, गूगल के सर्च इंजन में जाकर आप USEFP भी लिख देंगे तो यकीनन पाकिस्तान के में जो USEFP का इदारा काम कर रहा है उसकी वेबसाइट आपको आपके सामने आ जाएगी और आप उसको क्लिक करके तमाम तरह इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अच्छा सहर, आपसे मैं सवाल पूछना चाहूंगी क्योंकि आप वीजा ऑफिसर भी हैं, वीजा ग्रांट भी करती हैं स्टूडेंट्स को, तो जहाँ चैलेंजेस की मैंने आपसे बात की वहीं पे एक जाहिर है कि कभी कभी ये भी चांस आ जाता है कि आपको स्टूडेंट को वीजा जो है वो रिजेक्ट करना पड़ता है। आमतौर पर उसकी क्या रीजंस होती हैं, और इसके अलावा अगर कोई जिसका वीजा रिजेक्ट हो जाए वो दोबारा क्या एलिजिबल होता है अप्लाई करने के लिए, ये भी थोड़ी सी जरा तफसील आप बताइए। Absolutely, that's a fantastic question. And the reason that any non-immigrant visa is refused is because the person hasn't shown that they're eligible for that type of visa. So whenever we refuse a student, it's because they have not shown the officer their eligibility, or that they qualify for that type of visa. Generally what I suggest to students who aren't able to this, number one, sometimes it's due to finances. It may say that they have enough money, but once you actually look at the documentation and you actually ask a few more questions, the person may not have the finances to pay for the schooling. And that's really important, because we don't want someone to go there and study for a semester and then be stranded because they can't afford to continue their education. So my suggestion to those students is to look into other programs that are available, look into scholarships, contact USEFP, or talk to other people who may be able to help finance their education. That's one of the reasons that
a lot of students don't have a lot of control over sometimes. Otherwise, it's mostly students haven't shown that they qualify because they don't have they can't explain why they've chosen a certain program, chosen a certain school, or they just educationally, the officer is not sure that person would be a successful student in the United States. As Farhan has mentioned before, it can be difficult, right? I mean, it's a big transition. You have to deal with so many outside factors apart from your actual education. And so we want to make sure that the people that we send there will be able to go there and study and deal with all of those outside factors and also get a good education. So the officer is looking for someone who will be able to adapt easily to this new environment and who will be able to be a successful student. So if you are failing all of your courses here, but you want to go to Yale in the United States, we're going to ask a few questions about how do you think you're going to be successful there. Okay. And what about कि अगर reject हो जाता है तो वो कैसे दोबारा से address कर सकते हैं, eligible हैं, दोबारा नहीं हैं? Well, I think the best thing to do, if someone has been refused, I think the best thing for them to do is take a look at their background. The officer will sometimes give you a really specific reason. Otherwise, my suggestion is to try and get work experience, try and volunteer, try and continue your education with local institutions to show the officer the next time that you apply that you have done all of these things because you really want to pursue a certain subject. They can also take tests. If you can take the SAT, if you can take the ACTs, it's not always required, but it shows an officer that you have a willingness to pursue this specific degree. सही. अच्छा, बहुत सारी हमने बातें की जो USEFP के प्रोग्राम्स के हवाले से थी, उसमें जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं क्योंकि वो जर्नली स्टूडेंट्स को सारा गाइड किया जाता है फ्रॉम द स्क्रैच और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से वापस आने के बाद फॉलो अप और ये तमाम चीजें भी जो है वो साथ साथ हो रही होती हैं. लेकिन अगर एक स्टूडेंट खुद से मतलब वो स्कॉलरशिप पे नहीं जाता और अभी आपने क्योंकि फंड्स के अभी बात की कि उनके पास इनफ मनी नहीं होती, तो मेरे फौरन ज़हन में ये सवाल आया कि खुद से अगर जो स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं वो ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ के साथ रब्ता करते हैं और उसके बाद जो भी उनके फी प्रोसीजर वगैरह होता है उसको लेके चलते हैं, उनके जो उन स्टूडेंट्स को क्या आप लोग प्रेफर करते हैं इसी तरह ही जिस तरह USEFP के थ्रू जो आपके पास आते हैं? क्योंकि ज़्यादातर जो USEFP की तरफ से जो केसेस आते हैं क्योंकि जाहिर है कि वो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारी कंप्लीट होती हैं और 99% जो है वो वीज़ा ग्रांटेड होते हैं. तो आम जो पाकिस्तानी है अगर वो खुद से ये तमाम प्रोसीजर करना चाहे और तमाम अपने डॉक्यूमेंट्स बनाए, उनके जो वीज़ा गारंटी की जो होती है वो परसेंटेज कितनी होती है? I don't know. I mean, obviously, there's no guarantee when it comes to getting a visa. I mean, that's the honest truth. There's no guarantee. लेकिन USEFP का इसलिए मैं बात कर रही हूँ, ये नॉट ऑन अ बाइस्ड वे में बात कर रही हूँ, मैं उस सेंस में कह रही हूँ क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेशन में आपके साथ हेल्प आउट करते हैं हर पेपर बनाने में और उनकी तमाम डिटेल्स में स्टूडेंट को गाइड करते हैं हर चीज़ में प्रॉपर. तो इस सेंस में मैं कह रही हूँ क्योंकि एक आम पाकिस्तानी जो कि अगर USEFP के थ्रू नहीं आता तो बहुत सारे जैसे आपने कहा कि डॉक्यूमेंट्स उसके इनकम्प्लीट रह जाते हैं जो कि बहुत बड़ा रीज़न बनते हैं वीज़ा रिजेक्शन में. तो मैं परसेंटेज पूछना चाह रही हूँ कि उस तरह के स्टूडेंट्स की आप लोग कितना रखते हैं? I'm so sorry. I don't know. I could look it up for you when I get back to the office and let you know. But I honestly don't know the right. refusal rate. But I will say we have a very high number of Pakistanis studying in the United States. But even yesterday, our consul general met with us officers and said to us, we want more Pakistani students. We want you to apply. So if you have the desire and you can find a school that you think is a good match for you, please apply because we want more Pakistani students in the United States. I think this is really, very so when great. looking for schools, what do you think is the best possible way? Because a lot of people over here go for College Board when looking for schools, but it still leaves a bit of complications as in, they're confused because College Board has got a lot of options and, it's a lot of things that match, but the best school, how would you go about it? Well, as Jamie mentioned earlier, USEFP has advisors to help students with that, and I think they are probably the best people to help match students to schools and vice versa because they work with the students on a regular basis, they work with the schools on a regular basis, and they are able to match them very well. But if you're just doing a regular search on your own, I'm sure that 90% of the people that are coming to our window have done Google searches. It's really
I think the students should really think about what they want out of a school. Do they want to be at an all-girls school, an all-boys school? Do they want large classes? Do they want very small classes? Do they want to live somewhere very cold? Do they want to be, in the center of New York? They have to evaluate their own desires and their own abilities. And then once you look at schools, you can see, look at their web pages and see what they offer and decide if that school matches you. And if they need help, I really strongly suggest that they contact USEFP because they can help you figure out what exactly is important and what's maybe not as important, and help you identify schools that would be the best match for you. Okay. Shandana, you're pursuing sociology, right? Yeah. So you also, that's what you carried out to your exchange program. Now, you mentioned you had a great experience and everything, but do they give you the opportunity for any counseling in terms of how you want to pursue your education later on after you return to Pakistan? Do you have the opportunity? Yeah, I mean, when it comes to the university, it's different from university to university. Like Kansas State University actually had like a counseling department. They actually counsel you for every single thing. So if you have like career-based issues or something, you can definitely go up to them and ask them. And I actually went up to a lot of people, and you can, if you have like financial issues, then you can actually go to the financial office or whatever. And so yeah, I mean, if you want some kind of counseling about okay, I thought for a minute I thought it's an English program, so sorry. तो अगर आपको कोई ऐसी काउंसलिंग चाहिए जिसमें आप ये चाह रहे हैं कि आप आगे कैसे परस्यू करेंगे, डेफिनेटली आपको पहले अपनी वहाँ यूनिवर्सिटी की, आपकी अपनी यूनिवर्सिटी यानी जो आपकी होस्ट यूनिवर्सिटी अमेरिका में, उनकी क्या पॉलिसी है क्रेडिट ट्रांसफ़र करने के हिसाब से, उसका पता लगाना है. उसके बाद आपकी जो बैक होम जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसमें क्या है वो आपको पता लगाना है. सो डेफिनेटली आई मीन आई एम प्रीटी श्योर हर यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ ना कुछ तो ज़ाहिर बात होगा, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो क्रेडिट्स ट्रांसफ़र करते हैं. दूसरी मैं बात ये कहना चाहूँगी कि इट्स अ वेरी गुड प्रोग्राम. ये जो यूग्रेड ग्लोबल यूग्रेड है, इट्स अ वेरी गुड प्रोग्राम, क्योंकि ये सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जो आपके लिए एक दरवाज़ा है. आप इसको खोलते हैं, आगे और सारी चीज़ें खुलती हैं. बिकॉज लाइक वन ऑफ माई टीचर्स, मैं पहले भी एक दफ़ा मैं ये कह चुकी, वन ऑफ माई टीचर्स, ही वॉज रियली, आई मीन, मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ और वो मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे, बिकॉज आई वॉज रियली एक्टिव इन हिज क्लास. तो जब मैं जा रही थी तो मेरे लास्ट उस पर उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया और इतना कुछ किया कि ही एक्चुअली नॉमिनेटेड मी फॉर अनदर स्कॉलरशिप. सो लाइक दैट्स लाइक अ प्लस, यू नो. एंड आई मीन इट्स जस्ट सो, आई मीन जैसा आपने कहा कि आगे परस्यू कर सकते हैं, तो मेरे लिए एक रास्ता खुल गया. और डेफिनेटली अगर ये तरीका आपके लिए नहीं है तो ट्रांसफ़र आप क्रेडिट करा सकते हैं, आप कर सकते हैं. बाकी प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लाइक जेमी सेड, मास्टर्स प्रोग्राम एंड PhD प्रोग्राम्स. सो देयर इज ऑलवेज ऑप्शंस. सो या. अच्छा फरहान, आपसे हम चाहेंगे, क्योंकि अब प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने इख्तितामी लम्हात में दाखिल हो चुका है, तो हम चाहेंगे स्टूडेंट को कुछ आप कहना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें. सबसे पहला मैसेज तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ खुली हैं, उनकी तरफ देखें, उनको अवेल करें. दूसरा मैसेज, जो लोग स्टूडेंट्स के इर्द गिर्द हैं, पुश करें उनको इनकरेज करें, क्योंकि इनकरेजमेंट की बहुत ज़रूरत होती है. हमारे यहाँ पे है कि हो जाएगा, नहीं होगा, इस तरह, मतलब इन चीज़ों में आप एक ऑर्थोडॉक्स वे से हट के ज़रा चलें तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ऑब्वियसली मिलेंगी. इसमें यूनिवर्सिटीज़ जो यहाँ पे हैं उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि वो भी बहुत इनकरेज करें, क्योंकि हमें बहुत प्रॉब्लम्स हुए थे जाते हुए. एग्ज़ाम्स आपको देने होते हैं कभी टाइम से पहले, क्योंकि वहाँ पे सिस्टम और चल रहा होता है, थोड़ा डेट्स चेंज होती हैं, फिर आपको क्रेडिट आवर्स ट्रांसफ़र में और काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का मसला बहुत ज़्यादा आता है. मैं यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करूँगा सबसे कि वो इसमें हेल्प करें, क्योंकि एक टाइम पे मेरा ये इतनी बुरी हालात हो गए थे मेरे कि मैंने कहा था कि शायद मैं ना जा सकूँ आफ्टर सिलेक्शन, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं. आपको एक दिन में 2 एग्जाम्स देने पड़ते हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ का. ये तो आप यूनिवर्सिटी से भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वो जो है वो आपके साथ कोऑपरेट करें अगर इस तरह का कोई अपॉर्चुनिटी आती है. शंदाना, आप क्या कहना चाहेंगी जल्दी से? जी, मैं सबसे पहले स्टेट डिपार्टमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, USEFP का, द पीपल हु आर ऑलवेज बिहाइंड अस, वर्किंग फॉर अस. आई मीन ऑफ कोर्स दे डोंट वर्क फॉर अस, बट आई मीन दे आर हेल्पिंग अस, लाइक सहर एंड जेमी. आई एम सो सॉरी, but so like I would just like to thank all of them, and it's just like a great opportunity. इतनी हमारा जो ड्रीम है
I mean, there are always people outside who are always ready to help you. पाकिस्तानी इस वक्त लड़कियां सुन रही हैं, उनको क्या कहेंगे? That's a very good thing. मैं actually I'm from a tribe. I'm from South Waziristan. So I mean, definitely वहाँ की जो लड़कियां हैं उनको मैंने वहाँ जाके represent किया. आपकी जो personal statement है जब आप application के साथ देते हैं, बहुत सारे लोगों ने पूछा क्या चीज़ आपको actually stand out करेगी. अपनी personal statement में आप ایک تو سچ لکھیں, جھوٹ بالکل مت لکھیں, لیکن اس میں آپ اپنے جو ایمبیشنز ہیں ان کو کلیئرلی مینشن کریں. اف یو ڈو دیٹ, بیکاز دیٹس واٹ آئی ڈیڈ. اور میں نے جب اس میں بتایا کہ میں اپنی ٹرائب کی عورتوں کو وہ کروں گی, تو آئی تھنک دیٹس واٹ اسٹوڈ آؤٹ. اینڈ honestly it's not like aage matlab I am planning to go back to my village and like do a lot of stuff. Right. So definitely, I mean, I would encourage every girl, every single person, girls and boys, everybody to just apply and just believe that it can become like you can actually live your dream. Yeah, it's and a like, tip ke personal statement matter karti yeah, selection. It's a trip that I'm giving you right here. and then also sorry and then one more thing that I would just want to thank everybody who helped us so much. USEFP, Jamie, my advisors here back in Washington, Sarah Bushman, Ali Malik, and everybody. Farhan, my friend, who I went with. Achhi dostiyan banaye. Just go and jidhar bhi jana chahe wahan jaye, or just travel a lot. And it's thank amazing. you very much, Chandana. Sahar, what would you like to say to every student who are listening to you right now? Apply early. That's what I would like to say. Apply early. How much early? At least 3 months early. Right. Thank you for having Thank us. you. Jamie, what would you like to say? So to all the students who are listening, if you don't believe that you can do this, if you don't apply, you won't be able to go. But the truth is, this is an opportunity that's available to everyone. So please, if you are interested, please apply. Right. Thank you very much, Chandana. Thank you very much, Farhan. Thank you very much, Sahar. Thank you very much, Jimmy, for coming here. और आप लोगों की जो वैल्यूएबल गुफ्तगू है, यकीनन बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंस्पिरेशन उन्होंने दी होगी और यकीनन वो अर्ली अप्लाई करेंगे एटलीस्ट 3 months बिफोर. तलहा, आप closing words. Jamie and Sahar, thank you for bearing with us. It's been a pleasure having you. It's always been a pleasure whenever we're having any counselors over here. You guys are very cooperative, and I'm very impressed by your Urdu. After shukriya. Thank you. And Farhan and Chandana, I wish you guys the best of luck. Thank you. And to all our students, I hope you make the best of this opportunity. Best of luck. Work hard, and things will come through. Allah Hafiz. Thanks all. Commendable job it was, and it was fun being with you all, and inshallah we'll be seeing each other later on sometime. बिल्कुल जनाब. और लिसनर्स, जैसे कि हमारे अभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं इस प्रोग्राम में, उन्होंने भी आपको बताया और यकीनन आप लोगों का हौसला बहुत बुलंद हुआ होगा. हम लोग यहाँ जो माइक के यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रहे हैं. कोशिश यही हमने की है कि आप लोगों के जहनों में जो सवाल आ सकते हैं, एक आम सवाल, एक आम पाकिस्तानी के जहन में जो आते हैं, एक स्टूडेंट के जहन में जो आते हैं, कोशिश हमने की कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो है इस प्रोग्राम के थ्रू आप लोगों तक पहुंचाई जा सके. इस प्रोग्राम को हमने म्यूजिक फ्री रखा और आप लोगों के लिए कोई ट्रैक जो है वो इन 2 घंटों में हमने प्ले नहीं किया, लेकिन हमारा मकसद जो है वो इस प्रोग्राम में यही था. म्यूजिक आप हर टाइम सुनते रहते हैं, लेकिन ये जो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन होती है ये कभी कभी आपको सुनने को मिलती है. यूएस एम्बेसी का हम खास तौर पर शुक्रिया अदा करेंगे कि टाइम टू टाइम वो यहाँ पर तशरीफ लाते हैं और लोगों के जो बहुत सारे क्वेरीज होते हैं उनके ना सिर्फ ये कि उसको एड्रेस करते हैं, बल्कि उनको गाइड भी करते हैं कि वो कैसे अपनी फर्दर जो एप्लीकेशंस हैं उनको मजीद बेहतर बना सकते हैं. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आने का. और लिसनर्स, इसी के साथ ही सदर फानी को भी दीजिएगा FM 101 के नेटवर्क से इजाजत. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज. This is FM 101.